yesterday in the night, that too in the late night and today morning. And when the bill is in such a way it is being circulated, it is a specific direction is there. Direction 19B is there. By virtue of 19B, the direction of the Honorable Speaker, it is mandatory that the bill has to be circulated. Introduction of the bill. I do admit the fact that the Speaker has every right to abandon it or every right to exempt it. But the point is that the members are getting an opportunity by virtue of subclause 2 of Rule 72, that by which when the bill is being introduced, we will be getting an opportunity to oppose the introduction of the bill. Today afternoon, and just half an hour before, supplementary list of businesses put in the website. So how the members are getting an opportunity to oppose the introduction of the bill without going into the contents of the bill, number one, and also the list is not being circulated, agenda is not being circulated. So my point is that in all these bills, it is not fair on the part of the government in bringing such type of bills and getting it introduced. It is bulldozing of the legislation and the members' rights are being taken away. Parliament cannot be taken for granted. Why the government is, why the government can very well introduce the bill tomorrow. We are ready to oppose and we can very well state the reasons. Because the legislative competence. Yes, sir, I heard you. Yes, the legislative competence of the bill has to be challenged. If we want to challenge the legislative competence of the bill, we should have some homework. We should have to go through the bill. But unfortunately, we are not getting an opportunity to go through the contents of the bill. Yes, sir, I heard you. Just come. To the House and supporting it means it is quietly, it is bulldozing of the legislature that may not be allowed. सर 72-2 ये कहता है कि ये हाउस कॉम्पिटेंट है या नहीं है इस बिल को डिस्कशन करने के लिए या पास करने के लिए। ये जो बिल है सर, ये तो इस हाउस के द्वारा पास किया हुआ बिल है जिसको कि सरकार रिपील करना चाहती है। इसमें कौन सा 72(1) का वायलेशन हो रहा है? Please listen to me. Honorable Speaker, sir, has waived the requirements of Directive 19A and 19B on a request made by the Honorable Minister. प्रश्न ये है कि विधायक को पुनः स्थापित करने का अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में कहें वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनः स्थापित करें। Honorable Chairperson, sir, I introduce the bill. Thank you. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। Chairman sir, with your kind permission, I rise to move for the leave to introduce a bill to enable and empower the universities and other institutions to achieve excellence in teaching, learning, research and innovation through coordination and determination of standards in institutions for higher education, research and scientific and technical institutions, and for that purpose to constitute a Vikasit Bharat Shiksha Adhishtan to facilitate universities and other higher educational institutions to become independent, self-governing institutions and to promote excellence through a robust and transparent system of accreditation and autonomy, and for matters of connected therewith or incidental thereto. Sir, you will be given an opportunity to speak. I will give an opportunity. Kindly be seated. There are listed members to be given opportunity. माननीय श्रीमती ज्योति मनी जी, Not present. माननीय श्रीमती के काव्या जी, माननीय श्री मनीष तिवारी जी। Mr. Chairperson, I rise to oppose the introduction of the Viksit Bharat Shiksha Adhishtan Bill 2025 under Rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha. The grounds for the opposition of the bill are as follows. First, the bill results in excessive centralization of higher education
and violates the constitutional distribution of legislative competence. While Parliament may legislate under entry 66 of List 1 on coordination and determination of standards, this power is limited and cannot be used to occupy the entire field of legislation. The bill goes far beyond standards and intrudes into administration, affiliation, establishment, and closure of university campuses, their institutional autonomy, matters falling within entry 25 of List 3 and entry 32 of List 2, which covers incorporation and regulation of state universities. Second, the bill suffers from excessive delegation of legislative power, vast and substantial, ranging from accreditation frameworks, degree-granting powers, penalties, institutional autonomy, and even supersession are left to be determined by rules, regulations, and executive direction. This abdication of essential legislative functions violates settled constitutional principles governing delegated legislation. Third, the bill undermines the autonomy and independence of statutory regulatory bodies by making them bound by policy directions of the central government and subject to supersession at executive discretion. Such provisions erode institutional independence and offend the constitutional requirement of fairness, non-arbitrariness, and check on executive power under Article 14. Fourth, the bill also concerns Article 19(1)(g) of the Constitution of India by subjecting educational institutions to pervasive executive control, graded autonomy, intrusive compliance requirements, severe penalties and closure powers. It imposes disproportionate and unreasonable restrictions on the right to carry on education as an occupation. While regulation in the public interest is permissible under Article 19(6), the bill goes far beyond reasonable regulation and vests unguided overboard powers that fail the test of proportionality as laid down by this House and the Supreme Court. And last, Mr. Chairperson, sir, I oppose the bill given the overriding clause given by this bill over all other laws, coupled with the powers to supersede existing regulations, raising serious concerns of arbitrariness, legal uncertainty, impacting institutions established under state laws without any safeguards. And I do hope, Mr. Chairperson, sir, that the Minister would reply to each and every ground on which the introduction of this bill has been opposed. Mananiya Shri N.K. Premchandran ji. Sir, thank you Yes, very sir. much for... I will give an opportunity to you, Sir, thank you Sabatai ji. very much. Please be seated. Yes, sir. Please continue. Sir, thank you very much for affording me this opportunity to object the introduction of the bill. It is very difficult as far as I am concerned to even pronounce. A member from the South India, it finds it very difficult so as to even pronounce the bill. Name of the nomenclature of the bill, the Vikasit Bharat Shiksha Adhistadhan. I can't understand what is meant by Adhistadhan as the bill 2025. So my first objection is the nomenclature of the bill by virtue of Article 348, Clause B. The authority, notwithstanding anything contained in foregoing provisions of this part, until Parliament by law otherwise provides, the authoritative text of a bill to be introduced or amendments there to be moved in either houses of the Parliament or in the House or either house of the legislature of the state shall be in English language. So the bill, the nomenclature of the bill shall be, it is not made. This is Article 348, Clause B, the authoritative text of a bill shall be in English, but unfortunately the bill, the nomenclature of the bill, it is being, I don't know which language it's, whether it is Sanskrit or Hindi, I don't know, the Vikasit Bharat Shiksha Adhisthan Bill 2025, that is my first objection. And the second objection is regarding the issue that is the entry 66 in the schedule in the central list. I do agree with regarding the higher education, but unfortunately the education, even the higher education is also included in the concurrent list in the 7th schedule in the state list. Sir, 1972 through 42nd amendment, this education is put in the concurrent list. What is the purpose of putting it in the concurrent list? Before that it was absolutely within the domain of the state list. And what is the purpose of it? The main purpose is that the local resources and the requirements of the concerned state should be taken into consideration in framing the legislation by
in respect to the education. But as far as this bill is concerned, if you go through the contents of the bill, it is mandatorily the state governments and all the universities, even a university which is established under an act of the state government, they are bound to abide by the conditions of the commission. That means indirectly imposing the powers of the central government on which a right which is being vested upon on the state government means it is totally against the federal principles of the constitution, and it is centralization of the power with the center. It is against the basic principles of the federalism which is envisaged in the constitution. That is my second objection. And further the curriculum, the syllabus, and all these things are being determined by this University Higher Commission. The name is it is little bit different in Hindi. I don't know it, but I think that it is a Higher Education Commission. There also the political philosophy and the political ideology of the government at the center has to be imposed on the state. That is the main object and purpose of this bill, by which this bill is being brought in, by which the state's resources, the local requirements, and the state culture, tradition, language that will be taken away means that is also against the basic principles of the constitution, the federal principles of the constitution. And also I fully agree with the objections already raised by Mr. Manish Tiwari ji. Along with that objection, and also the bill is not being circulated in proper time, and it is being bulldozing in the house without having proper agenda in the list of business. That also I do object with this objection. I very humbly request the Honorable Chairperson, please refer this matter for tomorrow so that we can have a detailed discussion regarding the introduction, and otherwise this may be withdrawn by the government. These Thank are you, my sir. objections. Thank you very much, sir. Shri Professor Saugat Rai ji. Sir, already Mr. Manish Tiwari, Honourable Member, and Honourable Mr. Premchandran has opposed the introduction of the bill. But I first point out to the ineptness of the Ministry of Parliamentary Affairs. We got a copy of the bill late last time. Today in the list of business, the introduction of the bill was not mentioned. The supplementary list of business was circulated at 1 o'clock this afternoon. Now, is this the way the Parliamentary Affairs Ministry functions, where they do not even give us a chance to prepare for opposing the introduction? The main points opposing the introduction has been mentioned by Honourable Members Manish Tiwari and Mr. Premchandran. Sir, the Viksit Bharat Shiksha Adhishtan Bill 2025 is an effort to centralize power in the central government's hand with regard to educational matters. Earlier, there was a UGC, University Grants Commission, which decided on allocating funds for educational institutions, both universities and colleges. Now, that is being taken over and subsumed into the Viksit Bharat Shiksha Adhishtan Bill. I do admit that under Article 66, the centre has the power to legislate on the educational matters, though it is in the concurrent list. Entry subject 25 is subject to entries 63, 66 of list 1. So Parliament cannot assume comprehensive control over state universities. We have so many state universities in West Bengal. The Parliament will have total power over this. They will appoint vice chancellors and all that. As it is the governors in Kerala, West Bengal, and Tamil Nadu, they are interfering with the functioning of the universities. Now this gives legitimate power to the centre to control the functioning of the universities in higher education. This is essentially undermines autonomy and independence of statutory regulating body and checks on executive power under Article 25. This bill, hence, should not be brought. We oppose the introduction. We oppose the ineptness, the failure of the Parliamentary Affairs Ministry. They do not even give us an opportunity to study a bill. Thank you, sir. Mananiya Shri Selvan This Ganapati is not ji. done. Sir, you are a learned man. Teneti sir, you give a ruling on this.
let it be a historic ruling that this is not the way the parliament should function. Thank you, sir. Sir, I raised to oppose the introduction of the bill titled the Viksit Bharat Shiksha Adhisthan Bill 2020 under Rule 72 of the Rule of Procedure. Sir, the very name, the nomenclature itself is, we deem it to be an imposition of Hindi on those states which do not know Hindi at all. The reason, sir, all these years this government, any law they bring up, any scheme that they bring up, that they title it only in Hindi language and not as required by the Constitution of India. The Constitution is clear. The bill has to be, the name has to be, the nomenclature has to be in the language in English, so that every citizen, every part of the country knows what is the veracity of the bill. Sir, second, this against the federal principle of the Constitution. Sir, the concurrent list, the regulatory council under the commission proposed in the bill is against the spirit of the Constitution, particularly contravening the provisions under entry 32 of list 2. The power which entry 44 of the list 1 says the union government does not have power to regulate universities and is being vested with the union by this bill is arbitrary. Sir, in the name of the coordination and determination of the standards, the entire regulation of higher education institutions comes under the Government of India, the union government. This is totally a colorable legislation that gives arbitrary decision-making powers to the union government. Sir, this bill is nothing but an abuse of process of law. As per various provisions of this bill, practically the union government will be the sole decision-making authority, which is against the spirit of the Constitution. The union government will have the final say as if the bill is passed, which is totally contrary to the Constitution. In the name of Bharatiya knowledge system, whatever is asked to be followed by the Commission and its 3 vertical pillars has to be implemented by the higher education institution, failing which the institute will be deemed to have violated the Act and its accreditation may be withdrawn. So they have an enormous power. Whichever the university they want to completely deem to be violation, they can reject the accreditation. Without accreditation, no institute can function, and the accreditation power lies with the accreditation council. Sir, we therefore Thank you. Thank you, Chair. Thank you, Chairman, sir. On 3 grounds, I would like to oppose this bill. The bill's aggressive, unnecessary Sanskritized nomenclature directly violates Article 348(1)(b), which mandates that authoritative text of all bills shall be in the English language. There is no technical reason to use in Hindi names. 53 times Hindi names are used in this text of the bill. This Vinayam Parishad, இதெல்லாம் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. We don't எதுமே எங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. எங்களுக்கு நாங்க பேசுறது எப்படி உங்களுக்கு புரியலையோ அதே மாதிரி நீங்க இப்படி இந்த மாதிரி இந்தியை கொண்டு வந்து எங்க மேல திணிச்சா எங்களுக்கும் ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது. So அதனால வந்து it should be in English so that whichever the state wanted to understand the language, that language has to be allowed in this bill. This sees I see this as a kind of Hindi imposition. Already Tamil Nadu been actually deprived of Samashkrit SSA funds just because of we are not agreeing to the 3-language policy in the new education policy. This is another way of imposing Hindi on state like Tamil Nadu, which is very successful in 12-language system. Second thing, this is an attack on the federal structure. This bill moves forward despite the parliamentary standing committees on education explicit finding that the bill maintains a union government heavy composition and insufficient state representation. Sir, actually, given that state public universities and their affiliated colleges educate over 81% of India's total students,
students' enrollment and govern a network of over 46,000 affiliated institutions nationwide. This policy-making body's composition must reflect the immense scale and responsibility held by the state education sector, then executive overreach and undermining autonomy. The proposal moves decisively away from the independent regulation. Provisions granting the union government overriding power over the commission represent a clear attempt at executive outreach, fundamentally violating the doctrine of separation of powers by subordinating a key regulatory body of the executive. Clause 11.4 clearly states that regulatory council needs the prior approval of central government to provide or revoke authorization of higher educational institution, the authority to grant degrees. On this ground, I oppose the introduction of the bill. Thank you, sir. Thank you, ma'am. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनः स्थापित करने का अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ है, हाँ, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनः स्थापित करें। Sir, I introduce the bill and propose that this should go to. Sir, 1 second, sir. One second. I introduce the bill, sir. माननीय मंत्री जी किरण रिजिजू जी। During the meeting in the Business Advisory Committee, many honorable members have requested that this is an extensive bill and we need further deliberation on this bill. So government hereby proposed to send it to joint parliamentary committee and we authorize the Honorable Speaker to constitute the JPC in consultation with the other house and also with various political parties. Matter is placed. माननीय मंत्री जी, item number 14C, माननीय मंत्री Dr. Jitendra Singh ji. Speaker, sir, with your kind permission, I rise to move for leave to introduce the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025. Thank you, Speaker, sir. Thank you, sir. माननीय श्री बी बेहानंद जी, माननीय श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Chairperson, sir. I rise to oppose the introduction of the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025 under Rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha on the following grounds. First, the bill confers sweeping and pervasive powers on the central government across licensing, regulation, acquisition, tariff fixation, exemptions, emergency powers, and even novation of private contracts. Clauses empowering the centre to acquire mines, plants, reactors, substances, and contractual rights by executive action, while compensation determined largely by the government itself raises grave concerns under Article 300A of the Constitution of India and the guarantee against arbitrary deprivation of property. Second, permitting profit-seeking private participation in ultra-hazardous nuclear activities while simultaneously limiting liability, granting statutory immunities, and restricting judicial remedies undermines the state's non-delegable public trust obligations over life, health, and the environment. Such an arrangement amounts to an unconstitutional abdication of essential sovereign responsibilities and functions under Article 21 and 48A, where the state is required to act as a trustee and a guarantor and not merely as a facilitator or a licensor. Third, the bill suffers from excessive delegation of essential legislative functions. Core policy matters such as liability limits, safety standards, exemptions, regulatory norms, emergency measures, and even amendment of schedules are left to rules, regulations, or notifications issued by the executive
this abdication of parliamentary responsibility violates settled constitutional limits on delegated legislation under Article 245 and 246. And finally, Mr. Chairperson, sir, the bill concentrates legislative, executive, regulatory and quasi-judicial powers in the central government and authorities appointed, controlled and removable by it, including the Atomic Energy Regulatory Board, which needs to be an independent, autonomous statutory regulator. The absence of institutional independence, coupled with wide direction issuing powers and insulation clauses, undermines the doctrine of separation of powers, which is a basic feature of the Constitution. On these grounds, I strongly oppose the introduction of this bill. Thank you, sir. Honorable Minister, sir. Want to? No, Manish ji is a good friend, his points well taken, but I just want to mention that most of these objections are based on the merits of the bill, which are normally and by convention taken up during the discussion. So right now we are here only to the competency of the introduction of the bill. माननीय श्री बेहनान जी, माननीय श्री बेहनान जी. He is not speaking. Call on N.K. Premchandran. माननीय श्री N.K. Premchandran जी. Sir. And on legislative competence, Premchandran ji. Yeah, sir. Thank you very much, sir. Sir, by Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I do oppose the bill, the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025. So my point is, it is against the principles, against the directive principles of the state policy in Part 4 of the Constitution of India. Because the entire purpose of this bill, promoting this bill, we are having the Atomic Energy Act. And also we are having all these legal mechanisms are also there. And you see that the nuclear energy as well as rare earth minerals and mining and mineral separation and the nuclear section, everything is being vested with the public sector undertakings. The basic purpose by which this law is being brought in is so as to privatize this nuclear energy sector for the private companies. I am not mentioning any companies. I am from an area, from the minerals, beach and mineral area, by which we are having abundant thorium is there, supply is there, but unfortunately it is not being exploited and utilized by the government public sector undertakings so as to make use by the private entities and the private corporates for which this bill is being brought in. So it is against the directive principles of state policy. Therefore, I strongly oppose the introduction of the bill on the basis of this objection. Thank you very much, sir. Shri Professor Saugat Rai ji. I oppose this bill with a long name, Sustainable Harnessing of etc. etc. Now, this bill is being a watershed in the history of development of nuclear power in the country. You know, the Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, he set up the Atomic Energy Commission. The Atomic Energy Commission made significant progress in harnessing atomic energy. We had our first nuclear power plant in Tarapur. India undertook 2 nuclear implosions, whatever you call it. First at Pokhran in '74, then under Atal Bihari Vajpayee, again in Pokhran in 1998. So nuclear energy has been a matter which has exercised. Kindly be seated, please. Lot of Excuse me. importance to the people. Remember, sir, in 2000, Mananiya Sanjay Jaiswal ji. during Manmohan Singh's prime ministership, there was a big dispute in the country over nuclear liability bill should be introduced. Manmohan Singh's purpose was to get nuclear energy technical know-how from America and other countries. Now this is a new step where slowly the nuclear energy sector is sought to be given over to private sector. The government has been talking about this for some time, and now we have the Adani's big in power sector. Now they want to get into nuclear power sector, and this bill
is meant to facilitate Adani and other people. 1 second, sir. I heard you, sir. This is a basic. Mananiya Mantri Shri Kiran Rijiju ji. Since honorable members are repeatedly raising the opposition, opposing the introduction of the bill, today we are not passing the bill. There is no proposed for consideration. It is only introduction of the bill. And most of the opposition are coming, which are repeatedly being mentioned by honorable member, including what Manish Tiwari has mentioned. I have a specific point only. Under Rule 72(1), it is very specific on the legislative competence of this House to bring this legislation. Yes. And under Schedule 7 of the Constitution, in the list of union list at serial number 6, it is very specific. Atomic energy and mineral resources necessary for its production. Yes. So this House has very much have its full legislative competence to bring this bill. And as the Honourable Minister has stated, if there are consideration on merits, it should be brought out at the time of consideration. At this point of time, it is only introduction of the bill. So that will come back. Today we are not putting it for consideration. Sir, if we assume that it is not in the competence of the House to bring, even if it is assumed that it is not in the competence of the House to bring in a bill related to nuclear energy or atomic energy, may I remind the honourable members and the House that the same House brought the Atomic Energy Act 1962 when Pandit ji was the Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, and the same House brought the CLND bill when Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. So, if the bill could be brought in the House when Nehru ji was the Prime Minister, when it could be brought when Dr. Manmohan Singh ji was the Prime Minister, why now suddenly, because there is a different political party in power, suddenly the House has been forbidden from the prerogative of bringing in a bill on this subject? Yes, sir. I heard both the sides. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनः स्थापित करने के अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के हुआ, पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनः स्थापित सर, I introduce the bill. आइटम नंबर 16 अनुदानों की अनुपूरक मांगे श्री नीरज मौर्य जी। धन्यवाद सभापति जी। पूरक अनुदान मांगों के लिए 2025-26 72 अनुदान मांगे शामिल हैं। कुल राशि 1,32,268 करोड़ रुपए और अतिरिक्त अनुदान की मांग 41,455 करोड़ रुपए। इसमें दो तिहाई यानी कि 27,000 करोड़ से अधिक सब्सिडी पे खर्च करने की बात कही गई है। मान्यवर, ये आंकड़े कागज पर तो चमकदार लगते हैं, लेकिन हकीकत में एक ऐसी सरकार की कहानी बयान करते हैं जो प्राथमिकताओं से भटक गई है। क्योंकि ये ना केवल व्यर्थ का खर्च है, बल्कि आम आदमी की पीड़ा को नज़रअंदाज करने का प्रमाण भी है। मान्यवर, किसानों के लिए जो रासायन उर्वरक पे मांग रखी गई है, उसमें ज़्यादातर जो धन है वो सब्सिडी के लिए रखा गया है। मान्यवर, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से किसानों का बुरा हाल रहा। लोगों को ना तो फास्फोरस पोटास मिला, ना यूरिया मिली, ना DAP मिली। मान्यवर, इस अनुपूरक मांग में 23,423 करोड़ रुपए सब्सिडी पे लगाने की बात कही गई है। महोदय, आज जहां हमारा किसान MSP की मांग को लेके
दर दर भटक रहा है और उसको एमएसपी नहीं मिल रही है। किसान सड़कों पे खड़ा है, लेकिन सरकार सब्सिडी के नाम पे विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। आयातित यूरिया पर इतना खर्च क्यों? सरकार अपनी क्षमता बढ़ाने में नाकाम रही है, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिला। किसान को केवल महंगाई, कर्ज और आत्महत्या करने पे किसान मजबूर है। हम मांग करते हैं कि सब्सिडी को पारदर्शी बनाया जाए, आयात पर निर्भरता कम करें और किसान कल्याण को प्राथमिकता दी जाए, तभी मान्यवर अनुपूरक का कोई महत्व होगा। मान्यवर, बहुत सारे विभागों की बात इसमें चर्चा की गई है। हम प्रमुख रूप से शिक्षा विभाग पे बात करना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग का जो हाल है, जिस तरह से शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये जो अनुपूरक मांगा गया है उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 1303.72 करोड़, इसमें 2023.25 करोड़ की एक नई योजना लाई गई है, प्रधानमंत्री वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर, जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस के लिए 65.45 करोड़। सभापति महोदय, ये क्या मजाक है जब भारत के जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं आज वो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, गांव के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ऐसे में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है? जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए 42.63 करोड़ रुपए की मांग की गई है, जबकि जो SC/ST के लिए मात्र 2.04 करोड़ और ST के लिए तो केवल 33 लाख रुपए की मांग की गई है। ये भेदभाव क्यों? शिक्षा का अधिकार का जो कानून है वो अधर में लटका हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वादा अधूरा है, लेकिन पूरक मांगों में एलीट इंस्टीट्यूशन को प्राथमिकता। हमारी मांग है बुनियादी शिक्षा पर फोकस किया जाए, RTE को मजबूत बनाएं, ना कि चमकदार योजनाओं के नाम पर फंड बर्बाद करके ये जो 90,812 करोड़ के ग्रास वे का हिस्सा है, जो सेविंग से मैच तो हो रहा है, लेकिन सेविंग कहाँ से आई? शिक्षा बजट में कटौती करके आई है। तो शिक्षा के बजट को काटा ना जाए, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को भी महत्व दिया जाए। ये हम आपसे, सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं। मान्यवर, अनुपूरक जो बजट आया है, इस बजट में अच्छा होता कि हमारे बरेली के अंदर एक सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड रबर फैक्ट्री के 1400 से अधिक स्थायी और हजारों अस्थायी श्रमिक जो बेरोजगार हो चुके हैं। फैक्ट्री बंद है और लगभग 1432 कर्मचारियों की देनदारियों का मामला भी लंबित है। मान्यवर, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली के कारण इन परिवारों पर जीवन यापन का गहरा संकट लगातार बना हुआ है। फैक्ट्री प्रबंधन ने बकाया वेतन और अन्य देयों का समुचित भुगतान नहीं किया। सरकार की उदासीनता के कारण ये परिवार भूखों मरने के पर मजबूर हैं। सरकार इन श्रमिकों के भुगतान की व्यवस्था भी अगर इस अनुपूरक में करती तो शायद उन परिवारों का भी कुछ भला हो जाता, लेकिन मान्यवर, सरकार ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मान्यवर, अनुपूरक बजट आता है, मुख्य बजट आता है और हम सब लोग यहाँ 543 लोग चुन के आते हैं। मान्यवर, हम लोग अपने क्षेत्र में जब जाते हैं तो जनता हर तरफ विकास की बात करती है, क्योंकि एक यहाँ से नारा दिया जा रहा है विकसित भारत का नारा, और हम लोग खास करके जो मेरा आंवला क्षेत्र है, मैं ग्रामीण अंचल से आता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी रास्ते अच्छे नहीं हैं, सड़कें अच्छी नहीं हैं, पीने की पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं हैं। मान्यवर, जब हम लोग जाते हैं तो लोगों की अपेक्षा रहती है कि वो हमसे कुछ विकास की बात करते हैं, कुछ उम्मीद करते हैं, लेकिन मान्यवर,
सरकार ने जब केंद्रीय सरकार को खर्च करने का बजट कम लगा तो सरकार ने अनुपूरक की मांग कर ली। लेकिन मान्यवर हम सांसदगण जिनको बहुत कम सांसद निधि दी जाती है 5 करोड़ की, आप कृपया कंक्लूड। जब हमारे पास विकास की कमी आए या हम लोग नहीं काम कर पाते तो हम किससे पैसा मांगे? इसलिए मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस विकास में सरकार को हम सांसद लोगों की निधि को बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए। मान्यवर, जहां तक मुझे जानकारी है कि सांसद निधि सन 2010 में 5 करोड़ की गई थी। 5 करोड़ तब की गई थी जब जीएसटी नहीं थी। आज पूरे देश की कई विधानसभाओं में जो विधानसभा के सदस्य हैं उनका क्षेत्र छोटा होता है लेकिन उनकी निधि हम सांसदों से ज्यादा है। मान्यवर, 5 करोड़ कहा जाता है, उसमें भी 10 लाख कंटीजेंसी काट लिया जाता है माननीय और जीएसटी लगाई जाती है। धन्यवाद। इसलिए मान्यवर प्रोफेसर सौगत राय जी, मान्यवर मेरी बात सुन लीजिए। आप माननीय प्रोफेसर सौगत राय जी, मान्यवर कंक्लूड कर रहा हूं बस थोड़ा। मान्यवर, 2010 के मुकाबले महंगाई बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, मतदाता भी बढ़े हैं, लेकिन सांसद निधि बढ़ाने पे विचार नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार विकास नहीं कराना चाहती, और अगर विकास कराना चाहती है तो इस सांसद निधि को बढ़ाया जाए जिससे कि लोगों के हम लोग छोटे छोटे काम कर सकें। मान्यवर सभापति महोदय, मैं अंत में प्रोफेसर सौगत राय जी, यस। उनको रोकने को बोलिए। नहीं, सौगत राय जी आप बोलिए। नहीं, आपको 3 बार एक्सटेंशन दे चुके हैं सर। आप 20 सेकंड में रखिए, आप 20 सेकंड में रखिए। यस, सौगत राय जी आप बैठ जाइए। 20 सेकंड्स प्लीज। मान्यवर सभापति महोदय, जो प्राथमिकताएं हैं वो तो गड़बड़ लग रही हैं। रुपए 1,32,00,000 लाख करोड़ का जो व्यय है, इसमें किसान, युवा, महिला, गरीब कहाँ है? ये सरकार अमीरों के लिए अनुपूरक बजट लेके आई है। इसलिए हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि सब्सिडी से कारपोरेट्स को ना ध्यान दिया जाए, प्रोफेसर सौगत राय जी, जो हमारे गरीब जनता है उसका ध्यान दिया जाए। मैं इस अनुपूरक का विरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर next honorable member T.R. Baluji will be speaking, so kindly. I rise to speak on the supplementary demands for grants. I resent the fact that the finance minister is not here. Even the minister of state, he is there, he has become president of UP BJP. What will he look into finance? Sir, this demand is one for additional 41,000 crore spent. 41,000 crore please look at budget me, yeah. outgo. But actually the total supplementary demands is rupees 1.32 lakh crores. Out of this, 90,000 is technical because this amount will be made up from savings of different departments. 41,000 crores roughly will be outgo from the government. Out of this 41,000 crore, fertilizer is 18,000 crores. And out of that, 11,000 crores is for fertilizer subsidy, 7,000 crore is for import of urea. And 9,500 crores to Petroleum Ministry, out of which the oil companies will be made up for their loss as far as LPG is concerned. Unfortunately, this country produces only 33% of its petroleum requirement, so you can understand the situation. Now, I would say that the finance minister has tried to do a reasonable job in the sense that only 4.4%
is the fiscal deficit target we shall be able to meet this year. So even though the finance minister does not have a finance background, she has worked hard, I must say. But there are severe fault lines in the supplementary demands. What are the fault lines? Urea is in crisis. Farmers are lining up every day from the morning to get urea. Urea is being sold in black market. The government is doing nothing about that. Our production will be hit because of lack of urea. So second thing I want to mention is that oil marketing company, they want to be fully compensated for their loss in supplying LPG. So we may be in for another LPG subsidy, LPG price rise. I would urge the government that let them give more money, but not increase the price of LPG. Now I was saying that there are some fault lines in this whole budget. Why? Because even though we are controlling this thing, another is Vodafone. Vodafone government is considering relief for the financially stretched telco. So I would like to know whether government will actually give the answer. Now, sir, you are a studious man. You must have noticed 5 months ago, Modi's friend Trump, he said that India is a decaying economy, finished economy. This is what Trump said. I want to know what the central government says. Sir, the IMF has said that India is in C category. As far as IMF retained its C grade for India's national account statistics or GDP data. So even though the कमलेश जी आप उनको फ्री छोड़ दीजिए, हमारा बात नहीं सुनेंगे एकदम। Sir, GDP, they are saying that GDP growth is increasing. But IMF is saying that this is C grade in statistics. The government will have to reply what they are saying about. Sir, everybody will congratulate you for your election. But you listen to me. Sir, the other point I want to say is that where we are terrible is the rise in the fall of rupee. Rupee against dollar became 89.46 against the dollar from 89.12 against the euro. Our currency has fallen against all other major currencies, more against euro and also against the dollar. So we are in a very bad situation. All imports, including petroleum imports, will cost more. This is very bad. So we have to reply to Trump that we are not a dead economy. He said it on record that India is a dead economy. That's why we are not in a hurry to have a trade pact with India. IMF has given them a C grade. So we should be very concerned about all this. And you know, sir, we are discussing education a little while ago. India's rank in the Human Development Index is United Nations, UNDP, is 130. We are 130th country in the name of Human Development Index. That is on health, education and other matters. What has the government to answer about that? I don't want to speak for a long time, since Pratima Mondol will speak on our party. Sir, I want to pose one question.
why is the finance minister depriving West Bengal in the matter of MGNREG? This year, the NREGA dues to West Bengal was 7,000 crores. For the last 2 years, it's 52,000 crores. And total dues of West Bengal is 2 lakh crores. So why West Bengal is being deprived? You think we shall be kept down forever? No. We have already protested. We shall continue to protest. There are some people who are inimical to West Bengal, like Shukanto Mojumdar. They don't want West Bengal to get money. But in spite of everything, we shall give poor people their sustenance and we shall win the elections in 2026. That's why supplementary demands is an essential part of the budget making exercise. We know that if the government has shortfall, it has to be made up. We know that there is also technical savings in the sense that they will be made from savings of other departments. So in this way, another technical supplementary expenditure is rupees 8,337 crores is sought for transfer to monetization of National Highways Fund Infrastructure Investment Trust, INVIT, and rupees 35,950 crore is sought for investment under conversion of outstanding spectrum auction dues into equity in respect of Vodafone Idea Limited. So all is not well in the state of Denmark. Even though the government says our economy will be third economy in the world, it will be $1 trillion, $5 trillion economy. Economy has serious fault lines. I hope that the finance minister who insulted this house by not coming to the house in the time of debate will reply to all these questions whenever she comes here. Thank you, sir. Honorable Thiru T.R. Balu, sir. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்த மாமன்றத்தில் நடப்பு நிதியாண்டில் முதல் துணை மானிய கோரிக்கை 1,32,000 கோடிக்கான துணை மானிய கோரிக்கையில் பேசுவதிலே எனக்கு மிகுந்த ஈடுபாடு இருந்தாலும் இந்த 6 மாத காலத்திற்குள் இந்த 1,32,000 கோடிக்கு ஆன அதிகப்படியான செலவு எப்படி வருகிறது என்று ஆராய்ந்து பார்க்கின்ற நேரத்தில் 2 வகையாக பிரித்து சொல்கிறார்கள். ஒன்று 90,812 கோடி ரூபாய் அதிக வருவாய் வந்ததாகவும் சேமிப்பு வந்ததாகவும் ஒரு வகையிலே சொல்லப்படுகிறது. அடுத்த அதிக செலவுகளுக்காக 41,400 கோடி ரூபாய் அதிக செலவினங்களுக்காக அது தேவைப்படுகிறது சொல்கிறார்கள். முன்னாலே எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற அந்த 90,812 கோடியில் அவர்கள் மிகவும் எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டிய ஒன்று எதிர்பார்க்காமல் வந்ததல்ல. சேமிப்பு என்றால் சேமிப்பு எப்படி வரும்? சேவிங்ஸ் பேங்க்ல போட்டு வச்சிருந்தாங்களா? இல்ல, அந்த பணம் அவருக்கு வழங்கிய பணம் அதிகப்படியாக அதிக தொகையை முன்னாலேயே ஜெனரல் பட்ஜெட்டில் முதலாக அளித்த நிதிநிலை அறிக்கையில் அதிகமாக கொடுத்திருக்கிறார். அது திரும்ப வருகிறது, திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது. அதே போல அவர்கள் எதிர்பார்க்காத ஒன்று என்று சொல்வதற்கு எந்த நியாயமும் இல்லை. எப்படி என்று கேட்டால், பணம் அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தால் திருப்பி அனுப்புகிறார்கள். அதற்கு பிறகு அதிக வருவாய் என்று சொல்கிறார்கள். எப்படி அதிக வருவாய் வரும்? அதிக வருவாய் என்றால் ஏதாவது அவருக்கு வணிகத்துறையில் ஈடுபடுகின்ற இலாக்காக்கள் வைத்திருந்து அந்த வணிகத்துறையின் மூலம் அதிக வருவாய் வந்திருக்கிறதா? இல்லை. ஆக இரண்டுமே குளறுபடிகளாக நம்ப முடியாத ஒன்றாக இருக்கிறது மட்டுமல்ல, 41,455 கோடி ரூபாய் அதிக செலவினங்கள் வருகிறது. ஆகவே எங்களுக்கு இந்த நிதி இந்த மானிய கோரிக்கை நான் சேர்த்திருக்கிறேன் என்று அமைச்சர் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். 41,455 கோடியில் 18,525 கோடி ரூபாய் உரமானியமாக இருக்கிறது.
9,500 கோடி ரூபாய் கச்சா எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்கின்ற மானியமாக இருக்கிறது. இது ரெண்டும் ஆண்டுதோறும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒன்றுதான். உரமானியம் என்பது ஆண்டுதோறும் கொடுக்கப்படுகின்ற ஒன்று. அதே போல கச்சா எண்ணெய்க்கு கொடுக்கப்படுகின்ற பெட்ரோலியத்துறையில் கொடுக்கப்படுகின்ற மானியம் என்பது ஆண்டுதோறும் வருகின்ற ஒன்று. இது எப்படி எதிர்பார்க்காமல் இருந்தார்கள்? அது மட்டுமல்ல, உள்துறைக்கு 2,500 கோடி ரூபாய், 1,200 கோடி ரூபாய் வெளியுறவுத்துறைக்கும் 1,300 கோடி ரூபாய் கல்வித்துறைக்கும் அவர் வழங்கியிருக்கிற காரணத்தினால் ஏறத்தாழ 41,500 கோடி ரூபாய் புதிதாக அவர்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்படுகிறது என்று சொன்னால் நான் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நியாயமில்லை. ஏனென்றால் இதெல்லாம் முன்னாலே அவங்களுக்கு தெரியும். முன்னாலே அவர்களுக்கு தெரிந்திருந்தும் இந்த தொகையை ஏன் அவர்கள் முன்னாலே முதல்ல அறிவித்த நிதிநிலை அறிக்கையிலே சேர்க்கவில்லை என்றுதான் என்னுடைய கேள்வி. அவர்கள் பதில் உரைக்கின்ற பொழுது இதற்கு 90,812 கோடி ரூபாய்க்கும் அதே நேரத்தில் 41,450 கோடி ரூபாய்க்கும் உள்ள விளக்கத்தை அம்மையார் அவர்கள் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த நிதி மானிய கோரிக்கையில் மிகவும் கவனமாக பார்க்க வேண்டியது என்னவென்றால், அவர்கள் IMF அகில உலக மானிட்டரி அகில உலக ஆணையம், அந்த ஆணையம் நிதி ஆணையம் என்ன சொல்கிறது? இவர்கள் இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்படுகின்ற நிதி நிலை அறிக்கைகளும் அவர்கள் கையாளுகின்ற கணக்குகளும் சரியாக இல்லை, எல்லாம் சப்ஸ்டாண்டர்டா இருக்குது, தரக்குறைவாக இருக்கிறது என்று சொல்வது மட்டுமல்ல, நம்முடைய நாட்டினுடைய நிதிநிலையை அக்கௌண்டிங் ப்ரொசீஜர் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லி தரக்குறைவு என்று சொல்லி சி கிரேட் என்ற நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளிவிட்டார்கள். இந்த சி கிரேடுக்கு போனதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன நியாயமான காரணங்கள் என்ன? ஏன்னா 10.1% இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சி இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்ட நிலையில் நிதிநிலை அறிக்கை முதலிலே வைக்கிற நேரத்தில் 10.1% இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் ஜிடிபி. அதற்கு பிறகு இப்போது என்ன சொல்கிறார்கள்? 8.2% தான் ஜிடிபி என்று பிரதமரே ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார். ஆக 2% திடீரென்று குறைந்ததற்கு என்ன காரணம்? இப்படிப்பட்ட மோசமான நிலையிலே இந்திய பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி கண்டு கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்கள் அந்த தரத்தை சி கிரேடுக்கு ABCD என்ற நிலையில் சி கிரேடுக்கு அவர்கள் தள்ளியிருக்கிறார்கள். ஆக இப்படிப்பட்ட நிலை உருவாவதற்கு காரணமாக இருந்த இந்திய அரசினுடைய பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் நிச்சயமாக பலரும் சந்தேகப்படுகிறார்கள். டாக்டர் அரவிந்த் சுப்பிரமணியம், அதே போல டாக்டர் அருண் குமார், இவங்க 2 பேருமே இந்தியாவினுடைய மிகச்சிறந்த பொருளாதார நிபுணர்கள். அவர்களே இப்படி சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவர்களே இதை நம்ப முடியாத நிலையில் இருக்கிறது என்று அவர்களே சொல்லியிருக்கிறார்கள். அது மட்டுமில்ல, செஸ் வசூல் பண்றாங்க. செஸ் வரி, இந்த செஸ் வரி ஆண்டுதோறும் வசூல் பண்றாங்க. செஸ் வரி குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு குறிப்பிட்ட துறையில் அதை வசூல் செய்வாங்க. அந்த நிலை சரியான பிறகு அதை திரும்ப பெற்றுக்கணும். அதே நேரத்தில் குறிப்பிட்ட இலாக்காவுக்கு அந்த பணம் போய் சேரணும், செஸ் வரி போய் சேரணும். அப்படி போகல. குறிப்பாக 1975 போடப்பட்ட பெட்ரோலிய செஸ் வரி இன்று வரை 50 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 2.9 லட்சம், கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் கோடி வசூலாக இருக்கிறது. இந்த 3 லட்சம் கோடி 2.296,000 கோடி வசூலானதுல 902 கோடி மட்டும்தான் பெட்ரோலியத்துறைக்கு போகிறது. பெட்ரோலியத்துறையில் OIDB என்ற ஒரு நிறுவனம் இருக்கிறது, ஆயில் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் போர்டு. இந்த ஆயில் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் போர்டுக்கு இந்த 2,95,000 கோடி அங்கே போயிருக்கணும். ஆனால் போனதா இல்லை. அங்கே போயிருந்தா புதுசா திட்டங்கள் வந்திருக்கும். இந்த எண்ணெய் பற்றாக்குறை, கச்சா எண்ணெய் பற்றாக்குறை 20% மேல இருக்குது. 80% இம்போர்ட் ஆகுது, வெளிநாட்டிலிருந்து இம்போர்ட் ஆகுது. இந்த இம்போர்ட் வெளியுறவுத்துறையிலிருந்து இம்போர்ட் ஆகிற நிறை எல்லாமே போயிருக்கும். ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஒழுங்கினங்களுக்காகத்தான் IMF துறை இன்றைக்கு சி கிரேட் என்று நம்மை தாழ்த்திருக்கிறார்கள் என்பதை நான் கவலையோடு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். இப்போது அது மட்டுமல்ல, அவருடைய துறை, இந்த இந்தியனுடைய நிதித்துறை அவருடைய இந்தியாவில் இருக்கின்ற மற்ற துறையை நம்ம சரியாக நடத்துவதில்லை. எப்படி நடத்துவதில்லை என்றால் இப்படித்தான். செஸ் வரி வாங்குறாங்க, வாங்கிட்டு இவங்களே எடுத்துக்கிறாங்க. 902 கோடி ரூபாய் மட்டும் பெட்ரோலியத்துறை கொடுத்துட்டு மீது 2,90,000 கோடிக்கு மேல அவங்களே வச்சுக்கிறாங்க.
இது நியாயமா என்பதை கேட்க விரும்புகிறேன். ஒன்று, இதை போலத்தான் மாநில அரசுகளையும் ஏமாற்றுகிறார்கள். மாநில ஐ நீட் சம் 5 or 10 minutes ப்ளீஸ். மாநில அரசுகளை ஏமாற்றுகிறார்கள். எப்படி ஏமாற்றுகிறார்கள்? மன்ரேகா திட்டம். இந்த மன்ரேகா திட்டத்தை காந்தி பேருக்கிறதுனால இன்னைக்கு மாத்திரத்தை முயற்சி பண்ணுகிறாங்க. மிக மோசமான நிலையில் இந்த அரசு போய் கொண்டிருக்கிறது. இதுவே ஒன்று எடுத்துக்காட்டு. இன்றைக்கு 100 நாள் வேலை திட்டம் குறைந்து போய் கொண்டே இருக்கிறது மட்டுமல்ல, 30 கோடி மனித நாட்கள் தமிழகத்திற்கு இருந்த நிலை மாறி இன்றைக்கு 12 கோடி மனித நாட்கள் மட்டும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இதை விட கேவலம் என்னவாக இருக்க முடியும்? 1290 கோடி ரூபாயை மாநில அரசுக்கு ஒன்றிய அரசு தரணும். இதுவரைக்கும் தந்தபாடு இல்லை. 1290 பொருள்களுக்காக வழங்கிய தொகை, தமிழ்நாடு அரசு பொருள்களுக்காக வழங்கிய தொகை இதுவரை அவர்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை. அது மட்டுமல்ல, ரயில்வே துறையில் 31,450 கோடி திட்டம். அந்த திட்டத்தில் 301 கோடி மட்டும்தான் ரயில்வே திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கி இருக்காங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம்? 0.95%, 1% கூட இல்லை. ஆனால் தமிழகத்திலிருந்து மத்திய அரசுடைய வரி வருவாய்க்கு கொடுக்கப்படுவது 1 லட்சம் கோடி. இந்த 1 லட்சம் கோடி வாங்கிட்டு 301 கோடி மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க சொன்னா அது எப்படி சரியா வரும்? ரயில்வே துறைக்கு 301 கோடி, இது எப்படி சரியா வரும்? மெட்ரோ ரயில் திட்டம் 5 வருஷத்துக்கு முன்னால் நாங்கள் திட்டங்களை அனுப்பிச்சோம். 5 வருஷத்துக்கு முன்னால் அனுப்பிச்ச திட்டத்துக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால திருப்பி அனுப்புறாங்க திட்டம். மதுரைக்கும் கோயம்புத்தூருக்கும் மிகப்பெரிய நகரங்களாக இருக்கின்ற 2 இடத்துக்கும் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் வேணும் சொல்லி நாங்கள் அனுப்பிச்சதுக்கு எந்த பதிலும் சொல்லாம திடீர்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா 20 லட்சம் மக்கள் தொகைக்கு குறைவாக இருக்கிறது. அது 2011 சென்சஸ். 2011 சென்சஸ்ல எடுத்த போது 20 லட்சம் மக்களுக்கு குறைவாக இருக்காங்க, அது உங்களுக்கு கிடையாது என்று இன்னைக்கு அனுப்பியிருக்கிறார்கள். நான் கேட்கிறேன், ஆக்ராவில், இந்தூர்ல, புவனேஸ்வர்ல, நவி மும்பையில் இந்த கணக்கு வராதா? அது மட்டுமல்ல, ஜனத்தொகை கணக்கு பார்க்கறது, திட்டத்தை நிறுவது ஜனத்தொகை கணக்கு பார்க்கறதா, வயபிலிட்டியை பார்க்கறதா, லாப நஷ்டத்தை பார்க்கறதா, திட்டத்தில் லாப நஷ்டம் வருதான்னு பார்க்கறதா, அல்லது ஜனத்தொகை கணக்கை பார்க்கறதா? இந்த முறை மிக மோசமாக இருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்வேன். அதோட பூந்தமல்லிருந்து சென்னை வரைக்கும் ஒரு 10 கிலோமீட்டர். இந்த 10 கிலோமீட்டர் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, முடிந்து போனது, சேஃப்டி சர்டிபிகேட்லாம் வந்துச்சு. ஆனாலும் அந்த திட்டத்தை இதுவரை துவங்கி அந்த திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை. இது மிக மிக மோசமான நிலை என்பதை இந்த ஒன்றிய அரசு எப்படி தமிழக அரசை நடத்துகிறது என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. மாய்ச்சர் கண்டென்ட். விவசாயிகள் நெல்லை விளைவிக்கிறாங்க. செப்டம்பர் மாதத்தில் மழை பெஞ்சு அந்த மாதிரி மோசமான நிலை வந்த பிறகு அறுவடைக்கு போகின்ற நிலை, அறுவடை பண்ணாமல் இருக்க முடியாது. அறுவடை பன்றிய நெல்மணிகள் களத்து மேட்டுக்கு வருது. களத்து மேட்டில் இன்னும் ஈரப்பதம் அதிகமாகிறது. 17% தான் ஈரப்பதம் ஒத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. ஆனால் 22% வேண்டும் என்று தலைவர் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் திரும்ப திரும்ப கடிதம் எழுதுகிறார், கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார். ஆனால் இவர்கள் தரவில்லை. இப்ப என்ன பண்ண போறாங்க? தஞ்சாவூர்ல எங்க இந்த நிலை ஏற்பட்டதோ, தஞ்சை டெல்டாவிலும் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டுல இந்த நிலை ஏற்பட்டது. தஞ்சாவூர்ல இவங்க மாநாடு போட போறாங்களா? யாரு? அடுத்த 2-3 மாசத்துல பிரதமர் போக போறாரு. பிரதமர் போகும்போது என்ன வரவேற்பு இருக்கும் என்பதை நாம் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும். இந்த 17%-லிருந்து 22% என்பதை அவர்கள் கொடுப்பதற்கு தவிர்க்கிறார்கள். அடுத்தது கல்வி திட்டம், சமக்ர சிக்ஷா SSA ஸ்கீம். இந்த SSA ஸ்கீமுக்கு 3548 கோடி கொடுக்கணும். இந்த 3548 கோடியை புறக்கணிக்க முடியாதுங்கிறாங்க. ஏன் முடியாது? கல்வி திட்டத்தை ஏற்றுக்கணும். கல்வி திட்டம் இட் இஸ் நாட் அன் ஆக்ட், இட் இஸ் a பாலிசி ஒன்லி. ஒன்றிய அரசுடைய கொள்கையும் மாநில அரசு கொள்கையும் வேறு வேற இருக்கலாம். இதை நீங்க எப்படி எங்களை இன்சிஸ்ட் பண்ண முடியும்? அந்த கொள்கை எங்களுடைய கொள்கை தான் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். இன்னைக்கு இல்லை, எப்போதும் இந்தியை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். இந்தியை ஏற்றுக்கொள்ளாத தமிழ்நாடு தொடர்ந்து நீடிக்கும். இது அறிஞர் அண்ணா அவர்களுடைய கொள்கை, அண்ணன் கலைஞர் அவருடைய கொள்கை. இந்த திட்டத்திலிருந்து நாங்கள் மாறவே மாட்டோம். இந்தி என்றைக்கும் கிடையாது தமிழகத்தில் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். 2010 ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்படுகிறார்கள். 4 லட்சம் ஆசிரியர்கள் தமிழ்நாட்டில் நியமிக்கப்படுகின்ற ஆசிரியர்களுக்கு புது கொள்கை வகுக்கிறார்கள். நீங்க தகுதி தேர்வு பெற்றாதான் நீங்க ஆசிரியராக தொடர்ந்து போக முடியும் என்று சொல்கிறார்கள். 2010 அப்பாயின்மெண்ட் முடிஞ்சிச்சு. இன்றைக்கு 2024.
14 வருஷம் கழிச்சு 2 வருஷத்துக்குள்ள நீங்க தகுதி தேர்வு பெற்று நீ பாஸ் பண்ணாதான் தகுதி ஏற்பட்டாதான் நீ தொடர்ந்து ஆசிரியரை தொடர முடிவதற்கு சான்ஸே கிடையாது. மத்திய அரசு நேரடியாக கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகி புதிதாக அவர்களுக்கு அனுமதி வாங்கி தர வேண்டும். இல்லை என்றால் 4 லட்சம் ஆசிரியர்களுடைய நிலை என்னவாகும் என்பதை அவர்கள் வந்து எண்ணி பார்க்க வேண்டும். ஆகவே என்னுடைய அன்புக்குரிய நண்பர்களே, we demand immediate release of pending MNREGA funds due on restoration of labor and materials allegation. Number 2, to approve the increased moisture content of paddy 22% from 17%. Immediate approval of metro projects, Coimbatore and Madurai. Immediate release of rightful due of 3,548 from SSA scheme without any further delay. ஆசிரியர்களுக்காக 2010 வழங்கப்பட்ட அந்த பணி தொடர்ந்து நீடிப்பதற்காக அரசு இந்த ஒன்றிய அரசு நீதிமன்றத்தை நாடி புதிய அரசு ஆணையை பெற்று அந்த ஆசிரியர்களுக்கு வாழ்வளிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். வணக்கம், நன்றி. Thank you, honourable member. Sri K.C. Neni Sivanathji. Thank you, sir. I raise to speak on first batch of supplementary demand of grants for year 25-26. This batch covers 72 grants, with government seeking Parliament's approval for additional gross of 1.32 lakh crores. Sir, some of honourable members from opposition have spoken about economic disorder, but the facts are different. Under the leadership of our Honourable Prime Minister Narendra Modi ji, FDI has crossed 81 billion USD. MSP for major crops has gone up by 50 to 70%, with record procurement helping farmers, and over 75% of defence capital budget is now kept for Indian industry, boosting jobs and national security. Now speaking about supplementary demand for grants 25-26. Under these supplementary grants, Minister of Chemical and Fertilizers has been reappropriated 31,000 crores, a significant portion of which will strengthen urea subsidy scheme, sir. Sir, urea is not only a fertilizer, it is the backbone for crop growth. Any delay in supply threatens entire agricultural cycle. This year, Andhra Pradesh faced sudden surge in demand during peak Kharif season. At this critical moment, our Chief Minister Nara Chandrababu Naidu ji personally intervened. He took up the issue with Union government. The Minister J.P. Nadda ji, who swiftly responded, releasing fresh stocks and ensuring uninterrupted supply across the states. This timely assistance protected our farmers, our crops and their livelihood. Sir, an amount of 18,800 crores has been reappropriated to the Ministry of Road Transport and Highways. The Union government has built 10,660 kilometers highways in financial year 25, exceeding its target of 10,400 kilometers. This indicates government commitment to ensure connectivity across the country. Another critical transport project to ensure connectivity is the Metro Rail. Sir, among all the southern states, Andhra Pradesh is the only state without Metro Rail system. In this background, Vijayawada and Vizag Metro projects are not just transport systems, they are necessary for the growth of this region and achieving Prime Minister's goal of Viksit Bharat. Sir, 1,303 crores is being reappropriated to Ministry of Education. One of the key sectors in education is medical, for which building of new colleges are essential. Sir, when there is a crunch in financial resources, the central government from time to time comes up with innovative models to ensure development does not stop. But sir, YSRCP party today in AP is opposing the development of medical colleges. This is the sector they themselves neglected with inaction and false promises. They promised to build 17 new medical colleges, but the truth is that not even a single stone was laid to most of them. In 4 years of YCP government,
Instead of 85,000 crores, they have spent less than 1,000 crores. In this space, it will take 15 years for completion of these 17 medical colleges. Sir, after failing so badly, the same party now opposes nationally approved PPP model. The Department of Economic Affairs, Government of India has notified this model, and the apex body of medical education, the National Medical Commission, has recommended to build PPP medical colleges. Sir, and also the House Standing Committee on Health also recommended this colleges of this model. Yet YSRCP is against this model because they don't understand the difference between PPP and privatization. Sir, under PPP model, the government keeps full control while the private partners only support infrastructure, operation, and completing the construction within 2 years. Half the seats remains under government quota, all the reservations stay same, and the fees for these seats are capped to protect the students. In these hospitals, 70% of beds are reserved for Ayushman Hospital, Ayushman Bharat patients. This model ensures better infrastructure while safeguarding students and poor. Sir, if YSRCP is really committed for the public, they would have not spent 500 crores government money to build a palace for their chief minister, a gross ugly waste of public wealth. They could have instead used 500 crores for operational of these medical colleges. Their opposition to medical colleges through PPP model exposes their hypocrisy. Neither they will work nor they will allow anyone else to work. They cannot digest the development being pursued by our Honorable Chief Minister Nanda Chandrababu Naidu ji. Finally, sir, I conclude the supplementary grants show the government's clear commitment to welfare, agriculture, education, and health. Under the leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, India has delivered 8.2% of GDP growth despite of global uncertainty. Together, we build a stronger and brighter nation to our people. Thank you, sir. Thank you, Honorable Member. Mananiya Sadasya Shri K.C. Benugopal ji. Honorable Chairman, sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion of supplementary grants for demands. Basically, these demands for grants introduced in December 2025, about 72 demands and 1 appropriation. Sir, today the truth, the Indian economy is staring in the rise. Indian economy is staring in the face, sir. The rupee is weak, sir. Prices are high. Job is lacking, and confidence is collapsing. This is not a bad luck, sir, bad governance of this government. The rupee, sir, has fallen to its lowest ever, closing 90 against the US dollar, and still sliding, sir. This is not a small technical issue. When Honorable Finance Minister is not there here, 1,32,000 rupees they are asking from the Parliament, but Honorable FM is not here. Supplementary demands, I think FM's presence is needed. When we are talking about the rupees lowest price, she used to reply to us that it is not going to affect the economy at all. But what is the real thing, sir? It means it will higher the fuel prices, it will costlier imports, sir, and rising pressure on the common man actually. And Honorable Prime Minister, when he was the Chief Minister of Gujarat, he has told the rupees reaching, that point of time, rupees reaching 58 against US dollar. Then what he told, sir, seems there is a competition going in between the rupee and the government in Delhi about whose dignity goes down faster. This was told by our Honorable Prime Minister, sir. Now, sir, now rupees is now 90 against the US dollar, then whose dignity is now glowing, sir. That point of time, then Gujarat Chief Minister compared to the Delhi government. Now the rupees is 90. Then whose dignity is now lower? Certainly union government dignity is lower comparing to the rupees. Very, very unfortunate, sir. Sir, even more worrying is that the GDP rates that are given by the government is totally questionable internationally. They are questioned internationally. The IMF has flagged serious weakness in India's GDP data. Still the government is telling our GDP is better, but IMF still is already contesting it. So I would like to point out the concern with regard to the Ministry of Road Transport and Highway. We are passing the demands for supplementary demands for road transport and highway, sir.
For the year 25-26, the Ministry of Road Transport and Highway proposed an expenditure nearly 2.87 lakh crore, which is higher than last year. The allocation for roads and bridges alone is more than 1.16 lakh crore. India today has the second largest road network in the world. I agree, sir. National Highway network is developing and expanding. But Speaker, sir, the House must ask a fundamental question, sir. If the massive spending resulting in safe roads, sir, accountable governments is there, and value for public money is there in this. Or is it creating a system where public funds are converted into private few for a chosen few? The debate is not about the opposing highway development. We are all for development, sir. But debate is about the corruption happening in this area. Sir, the Bharatmala project we discussed so many times. It was intended to complete within 5 years. Now it is already 8 years already over. 50% of the work is not completed. Sir, now I am coming to my state, Kerala, sir. The consequences of reckless model are most visible in Kerala, sir, now. From Kasaragod in the north to Kollam in the south, national highway projects, two major stretches, NH66 and NH544, are collapsing before the eyes of the public. It's virtually collapsing, sir, roads. I think you are also aware of that. The roads are collapsing like anything in national highway, in Kerala stretch, sir. Elevated stretches are sinking, retaining walls are collapsing, service roads are flooded, and fresh cracks are appearing on newly constructed roads. Sir, in May this year, the entire stretch of elevated highway in Kuriyad was collapsed. The scene was catastrophic. The entire stretch is now beyond repair. Recently, NH wall in Kollam has been collapsed. Our Ramachandran raised this issue already. I can list out dozens of such incidents, sir. Sir, the problem, what is the problem? What is the problem? In my own constituency, one death was happened. 40 people died because of this construction site. There is no proper management. So what is happening in Kerala is not act of nature, sir. It is the result of a system where speed and profit were prioritized over safety and scientific planning, sir. Sir, the House must understand that these failures are not accidental. They are the outcome of a development model designed to maximize corporate profit, not public safety. And this brings me to the core issue behind the supplementary demand, basically the highway scam, sir. Let us look at one project, Adiyur Venkalam stretch of NH66 in the North Kerala. A road of just 40 kilometers. This project was awarded to Adani Enterprises for 1,832 crore. Adani did not build, sir. What they have done? Adani did not build. He subcontracted the entire work to Wagad Infra Projects, an Ahmedabad-based firm, for just 971 crore. You see, sir, the total contract was 1,838. He has given the subcontract to 971 crores, almost half the amount. The actual construction cost is therefore 23.7 crore per. Basically, the actual construction cost is 23.7 crore per kilometer. But Adani is being paid 45 crore per kilometer, sir. Sir, Adani will earn 2,043 crore from this one project alone, an excess profit of 1,310 crore funded entirely by public money, sir. This loot is legal, sir. I am not telling it is illegal. This loot is legal because the system was designed for it, sir. Kerala NH66 six-lane highway project has been divided into more than 19 phases. Some of these phases are being executed under the EPC model and some are in the HAM model. Projects executed under EPC model in Kerala have cost between 26 crore and 32 crores per kilometer, even with higher complexity. The bridges are there. Actually, the area is designed. Area is also very much complicated, but their money is lesser. The scam is not accidental, sir.
It was designed and facilitated through the hybrid annuity model HAM introduced in 2016 under the Modi government. Here is how HAM works. 40% of the project cost is paid during the construction itself. 60% is paid over 15 years annuity with interest of the bank rate plus 3%. A separate contract covers 50 years of maintenance on top of the 1,838 crores. Sir, you can see that in this case, the contractor got 735 crores during the construction itself. He will get 1,102 crores over 15 years as annuity. He will also get 940 crores as interest. He spent only 97 crores and earns over 2,043 crores. This is the profit margin more than 1,000 crores without laying a single brick himself. Just a minute. Rule. Mister, what's the rule? What's the rule? Rule 216. Please. 216 ये कहता है, वेणुगोपाल जी हमारे सीनियर सांसद हैं, पीएससी के चेयरमैन हैं। रूल ये कहता है कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में जिन चीजों के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स आया है, केवल और केवल उसी के लिए चर्चा हो सकती है। किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की चर्चा नहीं हो सकती, न किसी पॉलिसी की चर्चा हो सकती है। इसीलिए ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं और इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए उनको केवल डिमांड पर कहिए सर। ये रूल हमने नहीं बनाया है, रूल आपने बनाया है। रूल मावलंकर साहब ने बनाया, हमने नहीं बनाया। यही 216 है सर, रूल यही है। इसीलिए उनको कन्फाइंड करिए सर कि केवल और केवल वो डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर ही चर्चा करेंगे, सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर। My colleague in the honorable member, Venugopal. My colleague in the Treasury bench, Shrikanji, point out a point of order. Sir, we are giving supplementary demands. They are asking for national highway also, sir. I quoted that. They are asking supplementary demand for national highway. It's okay. Then we cannot discuss about national highway project, sir. No, you can. Then what else we have to discuss, sir? What else has to discuss, sir? Sir, let me come. Only 3 more minutes I will take, sir. 216. Sir, you have to follow the rule 216. Sir, I am seriously taking it, sir. Sir, this is a concern of our state, sir. Sir, this is a concern of our state. Every day road is collapsing, sir. Every day road is collapsing. People are in a very much fear complex. Please. Just 216, the rule. The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same, and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them, save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion. You are a senior member of the House. You should follow the rules. You should follow. No. Please be seated. You are not allowed. Please be seated. He knows. He is capable. He is capable. He is senior member. And Nishikantji raised this concern under Rule 216. Okay, so you should go with the Rule 216. Please be seated. Let you go. Let me complete, sir. Yeah. Sir, I am very much speaking on the issue of national highway, where the finance is demanding amount from Parliament. The finance ministry is demanding to the Parliament that this much amount has to be given to National Highway Department as a supplementary demands for grants. That's why I am speaking about that. This is one of the major issue Kerala is concerning, sir. Every day, road is collapsing, bridge is collapsing. People are in a fear complex. Sir, people are dying, sir. Sir, if you are not discussing in the Parliament, where it has to be discussed, sir? If you are not discussing in the supplementary demands for grants, where it has to discuss? Sir, my point is that this corruption, sir, I talk about the Adiyur Vengalam, sir, 45 crore per kilometer. You see Talapadi to Changala, there are only 43.7. There were 7 major bridges and 17 grade separators are there. This road is very plain. There are 17 bridges are there. There are only 43 crores. Kappirikadu to Talikulam, similar geography, cost only 35.1 crore.
Sir, this is a clearly loot, legalized loot, sir. This is a legalized loot, sir. Sir, we have to discuss. That every day, Honorable Minister itself sometimes told that everything is going wrong. Honorable Minister already told. Sir, my point is that, sir, this should be investigated, sir. This should be investigated. Because this is our public money, sir. Public kind of money cannot be taken away by some individual, sir. Sir, there should be scrutiny, there should be an investigation, sir. We are demanding for an investigation. With these words, I am concluding my speech, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Honourable Member. Shri Alok Kumar Sumanji. धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे द सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स फर्स्ट बैच फॉर 2025-26 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। महोदय, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के माध्यम से लगभग 41,455 करोड़ रुपए के नगद खर्च के लिए अनुमोदन मांगा गया है। यह राशि ग्रॉस एडिशनल एक्सपेंडिचर 1,32,268 करोड़ रुपए का एक हिस्सा है। हालांकि 90,812 करोड़ रुपए की बड़ी राशि मंत्रालयों ने आंतरिक बजट से एडजस्ट की जाएगी। शेष राशि 41,455 करोड़ रुपए के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल आवश्यक है। महोदय, वर्ल्ड की इकोनॉमी में प्राइसेज के बढ़ने या घटने के कारण और जन कल्याण की योजनाओं के बढ़ते खर्च की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स लाया गया है। वर्तमान सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स का बड़ा हिस्सा सब्सिडी को पूरा करने के लिए दिया गया है महोदय, जिसमें एलपीजी बिक्री कर पर नुकसान की भरपाई के लिए 9,473 करोड़ रुपए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 2,500 करोड़ रुपए, होम मिनिस्ट्री के लिए 2,298 करोड़ एवं हायर एजुकेशन के लिए 1,303 करोड़ रुपए दिए गए हैं महोदय। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा बिहार और देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। यह कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि वर्ष 2025-26 के सेकेंड क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी का 8.2% जीडीपी ग्रोथ हुआ है, जो इम्प्रेसिव है एवं देश के राज्यों एवं अन्य सबों के लिए यह इनकरेजिंग है। यह सरकार की ग्रोथ पॉलिसी और रिफॉर्म के कारण संभव हुआ महोदय। आप आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में है और हम जल्दी ही वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनने वाले हैं। वर्ल्ड के विकास के लिए भारत का योगदान 20% होने जा रहा है। आज हमारा फिस्कल डिफिसिट 4.4% होने की उम्मीद है। महोदय, देश में कंपनियां कैपिटल मार्केट से रिकॉर्ड फंड जुटा रही हैं, हमारे बैंक्स मजबूती के साथ योगदान दे रहे हैं, देश में इन्फ्लेशन बहुत कम हुआ है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, देश की करंट अकाउंट डिफिसिट कंट्रोल में है, फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत मजबूत है। आज हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स करोड़ों रुपए मार्केट में लगा रहे हैं। महोदय, सरकार के सुधार का ही परिणाम है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने रिकॉर्ड हाई के करीब है। टेक्नोलॉजिकल विकास में भी देश काफ़ी आगे बढ़ा है। 5G स्टैक देश में ही विकसित हुआ और हमने मेड इन इंडिया 5G भी बनाया और आज हम मेड इन इंडिया 6G पर तेजी से काम कर रहे हैं। आज देश में पारदर्शी नीति के कारण सेमीकंडक्टर से जुड़ी फैक्ट्री भी लगनी शुरू हो चुकी है महोदय। महोदय, अगर हम यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो और उसके लक्ष्यों को देखें तो हमने काफ़ी हद तक अपने लक्ष्यों को समय से पहले पूरा कर लिया है और यह देश के लिए और दुनिया के लिए एक उदाहरण है। महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र में हथुआ में सब्या एयरफील्ड है जो 471 एकड़ में फैला हुआ है। उसकी उड़ान योजना में 2020 में शामिल हो चुकी है और उसकी पिलरिंग एंड बाउंड्री हो चुकी है। बिडिंग की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। अतः महोदय, मेरा निवेदन है कि बिडिंग की प्रक्रिया शुरू कर इसको जल्द से जल्द चालू करने की कृपा की जाए।
महोदय, मैं अपनी बात रखते हुए अनुरोध करूंगा कि राज्यों में वेतन एवं पेंशन पर हो रहे खर्च के लिए भी जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान किया जाए, ताकि विकास संबंधी जरूरतों के लिए अधिक रकम खर्च हो सके। राज्यों के बीच बढ़ती राजकोषीय असमानता को भी कम किया जा सके। सबसे अधिक पूंजीगत व्यय करने वाले सड़क एवं रेलवे मंत्रालयों में वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से अगस्त के दौरान बजट आवंटन के अनुपात में अधिक व्यय हुए हैं महोदय। पिछले साल की तुलना में पूंजीगत व्यय में वृद्धि एवं राजस्व में आई कमी के कारण राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी हुई है। सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरोसा है महोदय। अपने देश में दूसरे देशों की तुलना में सरकारी खर्च कम है। 2022-23 के आंकड़े के अनुसार भारत में सरकारी खर्च का आंकड़ा देखें तो जीडीपी का 28.62% है, चीन का 33.4%, ब्राजील का 46.38%, अमेरिका का 36.2% और फ्रांस का 58.32% है। मेरा इसमें सुझाव है महोदय कि आवश्यकता सरकारी खर्च को घटाने की नहीं बल्कि उसे प्रभावी रूप से खर्च करने की है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि केंद्रीय और राज्य स्तर पर लोक निर्माण के सभी कार्य गुणवत्ता से परिपूर्ण हो। महोदय, सरकार ने विकास विरोधी बाधाओं को दूर करने के लिए और उसे सुसंगत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, जिससे कारोबारी लोगों की सुगमता बढ़ी है। बिजनेस रैंकिंग में भारत की ऊंची छलांग दिखती है। वैश्विक जटिलताओं के बावजूद सर्विस निर्यात बढ़ने से व्यापार में संतुलन बना हुआ है। महोदय, दुनिया भर में जहां 2.3 अरब लोग अभी भी खाद्य असुरक्षा के शिकार हैं, वहीं भारत में ऐसे लोगों की संख्या 33.5 करोड़ से अधिक है। दुनिया की आधी आबादी जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। इसमें भारत सरकार देश की ही नहीं बल्कि दुनिया को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता प्रदान कर रही है। महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये डिमांड फॉर ग्रांट्स का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री बजरंग सोनवाने जी। धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पे बोलने के लिए मौका दिया। आज मी या सभागृहात जे बिल आलं त्या बिलावर बोलताना भारत देश हा कृषीप्रधान देश म्हणून ज्याची गणना केली जाते, या कृषीप्रधान देशामध्ये शेतकऱ्यांसाठी ज्या काही मागण्या आहेत त्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यासाठी भारत सरकारने नवीन काहीतरी वाढ केली पाहिजे अशी माझी अपेक्षा होती। पण आता माग करताना भारत सरकारने त्याच्या बाबतीत काही मागणी केलेली नाही। शेतकऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त ग्रँट या नवीन ग्रँटमध्ये द्यावेत ही एक माझी मागणी आहे। एवढंच नाही तर साहेब, माझ्या महाराष्ट्रामध्ये बीड जिल्ह्यामध्ये धाराशिव बीड संभाजीनगर या रेल्वे मार्गासाठी अतिरिक्त निधी दिला पाहिजे। बऱ्याच दिवसापासून मागच्या 2014ला मोदी सरकार आलं तेव्हापासून जुन्नर चोंडी आष्टी असा एक रेल्वे मार्ग आहे, त्याच्यासाठी सुद्धा नवीन पैसे दिले पाहिजेत, बजेटमध्ये तरतूद केली पाहिजे। बऱ्याच दिवसापासून मागील 14-15 वर्षापासून अहिल्यानगर बीड परळी रेल्वे हा पण एक मार्ग आहे। या मार्गासाठी बजेट देऊन सुद्धा काम वेळेत पूर्ण होत नाही। त्याला जर बजेट कमी पडत असेल तर ते जास्तीत जास्त दिलं पाहिजे। आणि अध्यक्ष महोदय, संबंध या सभागृहातील MP जे आहेत, मेंबर ऑफ पार्लमेंट, यांचा जो निधी आहे हा निधी अगदी कमी आहे साहेब। माझ्या महाराष्ट्रात जर बघितला तर MLAचा जो निधी आहे, जो फंड आहे, हा फंड 5 करोड रुपये, म्हणजे 6 माझ्या खाली म्हणजे कमीत कमी 30 करोड। माझी एवढीच मागणी आहे की येणाऱ्या काळामध्ये 30 ते 35 करोड निधी वर्षाला तुम्ही MP लँडचा दिला पाहिजे अशी माझी या सभागृहाच्या वतीने आपल्याला मागणी आहे। साहेब, अध्यक्ष महोदय, आपल्या भारत देशामध्ये पोस्ट ऑफिस एक दळणवळणाचं खूप मोठं साधन होतं, पण पोस्ट ऑफिसेस बरेच काही बंद आहेत। त्याला नवीन पोस्ट ऑफिसेस काही माझ्या बीड जिल्ह्यामधील माझ्या कार्यक्षेत्रामध्ये झाले पाहिजेत अशी माझी मागणी आहे। आपल्याकडे मोबाईलचं युग आलंय, मोबाईलच्या युगामध्ये आपण मोबाईलवर आता पूर्ण जग चाललंय। या सर्व गोष्टी करत असताना माझ्या निर्वाचन क्षेत्रामध्ये आणखी बऱ्याच भागामध्ये मोबाईल टावर्स नाहीत।
महाराष्ट्रामधील बऱ्याच भागामध्ये हिल एरियामध्ये मोबाईल टावर नाही, त्याच्यामुळे मोबाईल टावरसाठी सुद्धा अतिरिक्त ग्रँट देऊन मोबाईल टावर झाले पाहिजे, ही माझी मागणी आपल्याला आपल्या माध्यमातून सरकारकडे आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय महामार्ग आमचे नितीनजी गडकरी साहेबांनी खूप मोठा देशामध्ये जाळं निर्माण केलं, पण साहेब काही माझ्या मतदारसंघामध्ये आणखी 4 लेन करण्याचे बाकी रस्ते आहेत. 548D 548C त्याच्यासाठी 4 लेनिंग आणि 6 लेनिंगसाठीचे एक नदी द्यावा अशी सुद्धा माझी मागणी आहे. साहेब, महाराष्ट्रामधील आरोग्य व्यवस्था पूर्ण ढासळलेली आहे. केंद्र सरकारनं आरोग्यासाठी सुद्धा इमारत असेल किंवा मेडिकलसाठी असेल, सिटी स्कॅनच्या मशीन असतील, अशा काही विविध योजना महाराष्ट्रासाठी दिल्या पाहिजेत अशी माझी आपल्या माध्यमातून सरकारकडे मागणी आहे. एवढंच नाही तर मेडिकल कॉलेज, माझ्या इथं प्रत्येक जिल्ह्याला एक नवीन मेडिकल कॉलेज द्यायचं हे केंद्र शासनाचं धोरण आहे, पण माझ्या जिल्ह्याला मेडिकल कॉलेज नाही, हे मेडिकल कॉलेज द्यावा ही एक आपल्या माध्यमातून सरकारकडे माझी विनंती आहे. साहेब, शिक्षणाच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय स्कूल, आर्मी स्कूल याच्यासाठी निधी कमी पडतो, याच्यासाठी सुद्धा अतिरिक्त निधी दिला पाहिजे. माझ्या गोरगरीब जनतेच्या लोकांचे मुलं तिथं शिकले पाहिजेत. माझ्या जिल्ह्याच्या बाबतीत, माझ्या एका निर्वाचन क्षेत्राच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर माझा जिल्हा महाराष्ट्र संबंध देशाला ऊसतोड मजूर पुरविणारा जिल्हा म्हणून ज्याची ओळख आहे. या जिल्ह्यातील माझ्या ऊसतोड मजुरांचे जे मुलं आहेत, या मुलांसाठी एक शाळा प्रत्येक कारखान्यावर किंवा फिरती शाळा तयार करण्यासाठी केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करावा आणि शाळा द्याव्यात ही एक माझी कळकळीची विनंती आहे. साहेब, एवढंच नाही तर आपला हा भारत देश हा ग्रामीण भारत देश म्हणून ओळखला जातो. ग्रामीण एरियासाठी, रुरल एरियासाठी ग्रामपंचायत ही सर्वात महत्त्वाचं केंद्रबिंदू आहे. या ग्रामपंचायतसाठी इमारत नाही, ज्या ग्रामपंचायतमधून आपला जसा मुख्यमंत्री एका स्टेटचा असतो तसा त्या गावचा तो मुख्यमंत्री आहे, पण त्याला तिथं बसायसाठी जागा नाही, खुर्ची नाही, इमारत नाही. इमारतीसाठी सुद्धा केंद्र सरकारने अधिक निधी द्यावा असं माझं प्रांजळ मत आहे. साहेब, पंतप्रधान घरकुल जी योजना आहे, पंतप्रधान आवास योजना, या योजनेसाठी आपल्याकडे तुटपुंजा निधी आहे. साहेब, आपण त्याचा निधी वाढवला पाहिजे. एका गरीबाचं घर जर व्हायचं असेल त्याला 5 लाख रुपये निधी अध्यक्ष महोदय दिला पाहिजे, ही माझी अत्यंत कळकळीची विनंती आहे आणि आपण सरकारला सांगून ती द्याल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. एवढंच नाही साहेब, घर घर जल पहुंचाने की केंद्र शासन की या मोदी सरकार का एक तो जल कहाँ पहुंचा घर. अभी जल जीवन मिशनचं 3, 13, 9, 12 वाजले, जल जीवन मिशन बंद पडले, त्याला पैसे नाही. साहेब, पैसे लवकर द्या. अध्यक्ष महोदय, आपण आपल्या माध्यमातून सरकारला सूचना कराल की त्याला जल जीवन मिशन या योजनेला पैसे द्याल. एवढंच नाही तर MREGS सारखी एक प्रचंड मोठी योजना आहे जी की गोरगरीब जनतेसाठी, महाराष्ट्रातल्या माझ्या देशातल्या गोरगरीब मजुरांना मजुरी मिळते. ह्या MR योजनेसाठी आमच्या महाराष्ट्रामध्ये MREGS बंद केले. साहेब, त्याला केंद्राचा 100% पैसा असताना सुद्धा पैसा दुसरीकडे वळवला जातो आणि त्याच्यावर खर्च होत नाही. त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे आपल्याला की हा निधी जास्तीत जास्त त्याच्यावर खर्च झाला पाहिजे, माझ्या गोरगरीब जनतेच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे. एवढंच नाही साहेब, आदिवासी ट्रबल आहेत, जे की दलित आहेत, यांच्या सर्वांसाठी वसतिगृह, केंद्र सरकारचे काहीतरी वसतिगृहासाठी निधी दिला पाहिजे आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून वसतिगृह झाले पाहिजेत. आणि शेवटची अल्पसंख्याकांसाठी एक माझी डिमांड आहे की अल्पसंख्याक मुलं असतील, मुली असतील, मुस्लिम समाज असेल, त्यांच्या शाळा कमी आहेत, कॉलेजेस नाहीत, त्यांच्यासाठी हॉस्टेल नाहीत, तर ज्या बिग सिटी आहेत तिथं हॉस्टेलच सुद्धा दिले पाहिजेत अशी माझी मागणी आपल्या मार्फत सरकारला आहे आणि याच्यासाठी नवीन ग्रँट्स द्याल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद जी. माननीय श्री सदस्य रवींद्र वाईकर जी. माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2025-26 की पूरक मांगदान सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट के पहले बेंच पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका सहृदय से आभार व्यक्त करता हूं. मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की न केवल रक्षा की है बल्कि उसे नई ऊंचाई पर पहुंचा है. महोदय, अब मैं सदन के पटल के रखी हुई पूरक अनुदान मांगों पर आता हूं. महोदय, सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 41,455 करोड़ रुपए की अतिरिक्त यानी नेट एडिशनल स्पेंडिंग की मांग की है. मैं सदन का ध्यान 7 प्रमुख आवंटनों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं. यानी उन्होंने पहला जो आवंटन किया है फर्टिलाइजर सब्सिडी, यानी 18,528 करोड़ का आवंटन वहाँ किया है. महोदय, कुल मांग का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 18,528 करोड़ रुपए केवल उर्वरित विभाग के लिए आवंटित किया गया है. आज दुनिया में खाद की कीमतें आसमान छू रही है, युद्ध चल रहे हैं,
सप्लाई चेन टूटी हुई है, लेकिन मोदी सरकार ने तय किया है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का बोझ हमारे किसानों के कंधों पर नहीं पड़ेगा, दिया जाएगा। ये राशि यूरिया पीएंड के उर्वरित सब्सिडी के लिए है, ताकि हमारे अन्नदाता को खाद सस्ती दरों में मिल जाए। दूसरा आवंटन जो किया है पेट्रोलियम एलपीजी के ऊपर, यानी करीबन 9,473 करोड़ का, पेट्रोलियम मंत्रालय के लगभग 9,500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। उसका उद्देश्य तेल कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई करना है, ताकि जनता को रसोई गैस और ईंधन उचित दामों पर मिलता रहे। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत गरीब परिवार को मुफ्त गैस कनेक्शन जारी करने के लिए यह आवंटन किया गया है। ये बजट का कुशल प्रबंधन है। तीसरी जो आवंटन किया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास करने के लिए, यानी 3,028 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के लिए, 340 रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया उसमें से। इसमें लद्दाख में बिजली खरीदना, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। हम सीमावर्ती क्षेत्रों को देश की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। सभापति महोदय, विदेश मंत्रालय के लिए 1,226 करोड़ का आवंटन किया है। भारत की ग्लोबल छवि और कूटनीति के पहुंच के मजबूत करने के लिए 1,226 करोड़ रुपए की मांगे है। इसमें हमारे पड़ोसी मित्र देशों में जैसे मॉरिशस हो, जैसे पैसिफिक आइलैंड देशों की सहायता और ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए योगदान शामिल है, जो रणनीति का रूप है, हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के लिए 1,303 करोड़ का नींव रखी गई है। शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा विभाग के लिए 1,303 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये राशि हमारे डिम विश्वविद्यालय के, जो अभी एक ही सदस्य ने कहा कि कॉलेज और ये स्टडी ये होना चाहिए, इसके लिए विश्वविद्यालय और प्रधानमंत्री वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जैसे क्रांतिकारी योजना के लिए, जिसमें हमारे छात्रों और शोधकर्ता को दुनिया के बेहतरीन रिसर्च पेपर्स मुफ्त उपलब्ध हो जाए। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आयकर और बुनियादी ढांचे के लिए देखिए, यानी फाइनेंस एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,831 रुपए का आवंटित किया गया है। उसका उद्देश्य कर व्यवस्था को सरल बनाना, आईटी विभाग के लिए आधुनिक कार्यालयों का निर्माण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, ताकि करदाताओं को बेहतर सुविधा मिले। महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं और राज्य देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है, वो महाराष्ट्र है, वो मेरी मुंबई है। उसके कुछ ज्वलंत समस्या और मांगों को आज मैं सदन में आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ। मुंबई देश को सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन मुंबई की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए और अधिक केंद्रीय सहयोग की आवश्यकता है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने लास्ट टाइम बजट में कहा था कि हम लोग घरकुल के लिए, देश के घरकुल के लिए, पीएमवाई के लिए 10,000 करोड़ रुपए की लागत रख देंगे, 10 लाख करोड़ की लागत रख देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,11,111 की लागत देंगे। तो उसी में का, जैसे मुंबई केवल एक शहर नहीं बल्कि एक मेगा रीजन यानी एमएमआर बन गया है। महोदय, लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफ लाइन है, लेकिन अब हमें मल्टी मॉडल काम चल रहा है, लेकिन लास्ट माइलेज कनेक्टिविटी अभी तक एक मेरी मांग है कि मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट एमयूटीपी के अगले चरणों के लिए बजट किया जाए। हमें कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए और अधिक फ्लाईओवर और अंडरपास की आवश्यकता है, ताकि आम आदमी का ट्रैफिक में बर्बाद होने वाला समय बचे। मुंबई हमारी नॉर्थ वेस्ट बड़ी हुई है, तीनों तरफ समुद्र है, एक बाजू हिमालय की पर्वतरांगा है। जो हमारा एरिया है 493 चौरस किलोमीटर, और मुंबई के जो रोड है वो 2005 किलोमीटर के, मगर वो अभी पूरे नहीं गिरे। ताकि ये ट्रैफिक के समय बचने के लिए उसके लागत, आर्थिक लागत की जरूरत है, केंद्र शासन में ध्यान दिए। वर्सावा जेटी का आधुनिकीकरण, मेरे संसदीय क्षेत्र में वर्सावा एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कोलीवाड़ा यानी मछुआरों की बस्ती है। यहाँ की जेटी की हालत बहुत जर्जर है। हमारे मछुआरे के भाई बहन को मुंबई के मूल निवासी है, उन्हें अपनी नावें खड़ी करना और मछली उतारने के भारी कठिनाई होती है। मेरी मांग करता हूँ कि सागरमाला परियोजना के तहत वर्सावा जेटी में आधुनिकीकरण विस्तार के लिए विशेष फंड जारी किया जाए। साथ ही मुंबई में जल वाटर मेट्रो, जैसा मैंने कहा, हम लोग कोची गए थे जहां वाटर मेट्रो की सुविधा है, उसी प्रकार से रोरो सेवा का विस्तार मुंबई शहर में होना चाहिए।
सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट। महोदय, मुंबई रोज करीबन 6,500 मैट्रिक टन कचरा पैदा करती है। देवनार और डंपिंग ग्राउंड अब कचरे से पहाड़ बन चुके हैं, जो न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है बल्कि आसपास रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य साथ खिलवाड़ है। बार बार यहाँ आग लगती है और जहरीली धुआं फैलती है। मेरी मांग है कि केंद्र सरकार वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स लगाए कि मुंबई महानगर पालिका को विशेष तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करे। हमें कचरे के निस्तारण के लिए वैज्ञानिक तरीकों को जल्द से जल्द अपनाना होगा। सभापति महोदय, जल निकाय का कायाक्रम यानी रीजनरेशन ऑफ वाटर, मुंबई में नदियों और तालाबों का शहर कहा जाता था। आज मीठी नदी नाले में परिवर्तित हो चुकी है। पवई झील और यानी कचरे का कूड़ा बन गया है, यानी सीवर का पानी वहाँ डायरेक्ट जा रहा है। मेरी मांग करता हूँ, ना गंगा की सफाई की गई है, उसी प्रकार ही मीठी नदी की भी सफाई कर दिया जाए। मुंबई में जल निकाय के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की जाए। जब तक हम अपने जल स्रोतों को पुनर्जीवित नहीं करेंगे, मुंबई बाढ़ और जल जमाव की समस्या मुक्त नहीं सकती है। दमन गंगा और पिंजर और मेरे को 2 मिनट चाहिए सभापति महोदय। महोदय, जल की जो मुंबई यानी गारगाई यानी पिंजर, उसके माध्यम से मुंबई में पानी लाना बहुत जरूरी है। मुंबई की आवश्यकता अभी जो है 4,400 दशलक्ष लीटर की आवश्यकता है, हम देते हैं 3,800 दशलक्ष लीटर पानी। तो गारगाई और पिंजर ये 2 धरण जो बांधे जाएंगे शासन के माध्यम से, तो मुंबई के लिए फायदे का होगा। उसी प्रकार कोकण रेलवे जो सिंगल ट्रैक पे चल रही है, हालांकि विद्युतीकरण काम पूरा हुआ है, लेकिन अब तक पूरी लाइन 2 पदरी एंड डबल लाइनिंग नहीं होगी, कोकण का विकास अधूरा रहेगा। मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि रोहा से मडगांव तक उस दोहरीकरण के लिए बजट समेटा जाए। उसी प्रकार के खाली घुसपैठिए का एक पॉइंट है मेरा। महोदय, ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा मुंबई के अस्तित्व से जुड़ा है। मुंबई और उपनगरों में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। लोग न केवल झुग्गी झोपड़ियों में अवैध कब्जा करे, बल्कि स्थानिक नागरिकों को संसाधन, पानी, राशन और रोजगार पर डल्ला मार रहे हैं। यह जनसंख्या परिवर्तन भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। मैं गृह मंत्री से मांग करता हूं कि मुंबई और महाराष्ट्र में एनआरसी की तर्ज पर एक अभियान चलाया जाए, अवैध घुसपैठियों को पहचान की जाए और उन्हें निर्वासित यानी डिपोर्ट किया जाए, ये मेरी मांग है। उसी प्रकार से मुंबई में एम्स की स्थापना करना चाहिए कि सब देश से कैंसर के इलाज के लिए हमें मुंबई में आना पड़ता है कि एम्स की मेरी मांग है। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। किफायती घर यानी एफोर्डेबल घर और भाड़े के घर मुंबई में ज्यादा से ज्यादा पीएमआई के माध्यम से लाना चाहिए, ये मेरी मांग है। अंत में यही कहना चाहता हूं, ये पूरक बजट भारत की विकास यात्रा को गति देने वाला बजट है। सबका साथ सबका विकास के लिए मंत्र को चरितार्थ करता है। मुंबई और महाराष्ट्र की इन मांगों को विशेष एम की स्थापना पर सरकार सकारात्मक रूप अपनाए, इसीलिए इसी में मांग करता हूँ और मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सिंह जी, मैं आसन और सदन के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूं कि अभिव्यक्ति के ये बहुमूल्य सूक्ष्म क्षण मुझे प्रदान किए। आदरणीय, इस पूरी अभिलेखों के प्रति जो व्यापक व्यवहार चिंतन के माध्यम से इस सदन में प्रस्तुत किया गया, उसमें गंभीरता के वो क्षण भी समाहित हैं जहां वैश्विक दृष्टि से भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति प्रतिपक्ष का उदासीन वक्तव्य इस बात को दृष्टिगोचर करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्थित छवि होनी चाहिए उस पर कहीं आखेट हुआ है। अभिव्यक्ति के वो क्षण सदन की सत्यता की विषय को और सारगर्भित मर्यादा की व्यवस्था को संपादित होने चाहिए थे, लेकिन इस बात का अचरज होता है कि कैसे शब्द के व्याकरण की वर्णमाला को प्रस्तुत करने में सच को व्यवस्थित तौर पर न प्रस्तुत कर एक ऐसा अंश प्रस्तुत किया जाए जो सच का आधा हो और सत्य के संपूर्णता को परिभाषित करने में कहीं न कहीं
कसौटी पर खरा नहीं उतरता। मैं इस बात के लिए बड़े आदर से सभापति महोदय आपसे विवेचन करता हूं। सम्मान्य निशिकांत जी दुबे ने यह बात बिल्कुल सही कही कि 216 के माध्यम से जब आप अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हो तो आपकी सीमा अनुपूरक मांगों तक होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि व्यापक चर्चा भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को परिदर्श करते हुए विवेचन के रूप में प्रतिपक्ष ने प्रस्तुत कर दी, तो यहां मैं एक बात आपके बीच में आपके समक्ष रखना चाहूंगा। भारत की स्थिति आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? पूरे संसार की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक व्यवस्था, और इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सामने भारत की वर्तमान सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया हुआ आज आर्थिक विवेचन, सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्र की व्यवस्था को विमोचित करने का पारदर्शिक मार्ग प्रस्तुत करता है। उसके उपरांत भी प्रतिपक्ष इस बात के लिए बार बार अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है कि कहीं भी इसमें सफलता की चिंगारी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो आदरणीय उसी अमेरिका जिसके डॉलर के संबंध में इतनी चिंता व्यक्त की गई है, मैं वहीं के एक प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा वो विवेचन प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि भारत जैसा एक डेमोक्रेटिक, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश, what do you do when the world's largest democracy decide it no longer needs your permission? उन्होंने अमेरिका के लिए कहा है कि how does America have to behave? India, the world's largest democracy, feels it doesn't require anyone's permission. You push back. This isn't about just tariff. It is about control. And right now, India is breaking free. The United States knows it, and it sits nervous. US President has threatened tariffs on Indian exports. The official reason, trade imbalance. The real reason, India is rising fast and Washington doesn't like what it can't control. Now, why are they not in a position to accept this? Instead of targeting the government of India, its proper deeds, why are they not accepting this fact? Somebody wants to control you with Mr. Narendra Modi. It is not possible. यहाँ इस बात की व्यवस्था को हमें अंजाम देना पड़ेगा। मैं, I'll just, please let me know when my time runs out. भारत की स्थिति क्या है? हम अपने ही शास्त्र उचित चरित्र की मर्यादा में जब वैश्विक व्यवस्था का परिलेख देखने की कोशिश करते हैं तो भारत की स्थिति आपको ठीक वैसी नजर आती है जो महाभारत के समय श्री कृष्ण ने अपनी मैत्रिक संधि के माध्यम से कुरु के राष्ट्र को एक मैत्रिक रूप में एक विवेचना प्रस्तुत करी थी। आदरण, जब अहंकार परिस्थिति के परिदृश्य में सर्वोपरि हो जाता है तो विनाश की शुरुआत होती है। इस महाबली राष्ट्र जिसको आप अमेरिका के नाम पर उसकी डॉलर की इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हैं, जब अहंकार के अंगारे से वो अपने बात को राष्ट्र में और संसार में प्रस्तुत करना चाहता है तो भारत के शास्त्रीय उचित मर्यादा और चरित्र इस बात का आगाज करता है कि प्रतिरोध होना चाहिए, सदन में भी होना चाहिए और संसार के पटल पे भी होना चाहिए। मैं अभी आ जाऊंगा सर, मैं आपके बजट की अभिलेखा तक आ जाऊंगा और सूक्ष्म बिंदु तक आ जाऊंगा। आपने ये बात बड़े
तर्क से कही, तो आर्थिक स्थिति के अंदर आंकड़े क्या कहते हैं वो भी मैं निवेदन कर देता हूं, और अगर आपको अनुचित ना लगे तो आप उसको लिख लेना और वापस देख लेना। While unprecedented geopolitical has surfaced, आज से पहले आपने इस स्थिति को नहीं देखा, इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती थी। The fundamentals of the Indian economy remain strong. The foreign direct investment in India rose by 18% from year to year, अगर आप बैक से देखें तो, to 35.18 billion during April-September of this fiscal year, while the inflow from US more than doubled to $6.62 billion during the period. According to the latest government data released on December 1, investment from overseas during April to September period of the previous fiscal year stood at 29.79 billion. During the preceding June-September quarter 25-26, the inflow increased by over 21%. I am not saying, sir, I have not conjectured this figure. Even if I wanted to, I couldn't have put it in this way. The question is, why aren't we in a position to accept the reality? आपने अनुपूरक मांगों के माध्यम से फर्टिलाइजर्स के लिए 11,000 करोड़ तो आपने फॉस्फेट और उसके लिए मांगे, और यूरिया के लिए आपने मांगे तकरीबन 20,000 करोड़। आपको और हमको इस बात का हर्ष होना चाहिए कि जिस प्रकार से मॉनसून हुआ, जिस प्रकार से बारिश हुई, जो संभावित रूप से बजट के समय जो हमने आकलन किया था कि कितनी भूमि पर एग्रो एक्टिविटी होगी, अच्छी बरसात के कारण ऐसी भूमि जो एरिड या बारानी थी, आज वो भी कल्टीवेशन में आ गई। जब कल्टीवेशन में आ गई तो आपको यूरिया, फॉस्फोरस, एनपीके, डीएपी सबकी आवश्यकता पड़ी, और उसके अगर लिए आपने अनुपूरक मांगों के माध्यम से सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगी, तो इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय यह होना चाहिए कि जब बजट आया था 50.62 लाख करोड़ के बजट के बाद अगर आप अनुपूरक मांग लेके आ रहे हैं, तो क्या फिस्कल डेफिसिट पे, क्या रेवेन्यू डेफिसिट पर इस पर असर पड़ेगा, और जो वो आपने किया था क्या आप उससे बाहर चले जाएंगे, वो टारगेट पूरा नहीं होगा। तो मैं आदरणीय आज आपसे निवेदन करता हूं, 1.9 से 1.5% रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट हमारा है और हम इस टारगेट पे रहेंगे, और हमने फिस्कल डेफिसिट 4.8 से 4.4 करने का जो वादा किया है, मुझे पूरा विश्वास है इस वित्त वर्ष के अंत तक हम इस टारगेट के भीतर रहेंगे, अपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ेंगे। मैं आज वित्त मंत्री जी आपसे इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, आपका तकरीबन 2 लाख करोड़ के ऊपर का जो व्यय है वो फर्टिलाइजर्स पे। प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कह चुके हैं, कृषि मंत्री जी भी इस बात को स्वीकार, हमें अपने एग्रीकल्चरल पैटर्न को डाइवर्ट करना पड़ेगा। अगर आप नेचुरल खेती की तरफ जाते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाते हैं, तो एक सबसे चीज जो अभी कहीं ना कहीं इस परिदृश्य में नहीं आ रही कि जिस काश्तकार को या जिस कृषक को या जिस अन्नदाता को अपने प्रोडक्शन में जो कमी आएगी उसकी पूर्ति आप कैसे करेंगे। साइंटिफिक तरीके से ये बात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने ये बात कही है कि अगर आप ऑर्गेनिक खेती की प्रति तरफ जाते हैं या परंपरागत खेती की तरफ जाते हैं या नेचुरल, तो आपका जो प्रोड्यूस आता है उसको सामान्य बाजार भाव से कुछ ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन यहां एक बात को और देखना है सर, हमारे भारत मूल की ऐसी कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी को कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। एक कंपनी ने सिंगापुर से 6.32 मिलियन मैट्रिक टन का एग्रीमेंट किया है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कृषकों के अपनी कृषि की व्यवस्था से और उस खेती के माध्यम से
कार्बन उत्सर्जन को कम करके उसको ट्रेड करके उनको उसका लाभ पहुंचाएं। इस प्रकार की अगर व्यवस्था नीति आयोग, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और इसके साथ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, आप अगर भारत के अन्नदाता को यह बात सुनिश्चित कर दें कि उसके पैदा के अलावा जो कुछ भी वो इस प्रकार की गतिविधियों में जहां प्रदूषण की कमी हो सकती हो, आपको वित्तीय व्यवस्था मिलेगी। मुझे 5 मिनट का आप समय दीजिएगा, मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा। तो कम से कम ये बात होगी। और मैं राजस्थान के संबंध में एक निवेदन करने जाता हूं। हमारे पास में भूमिगत पानी नहीं है, हमारे पास में नदी से पानी आता है, जहां कैनाल है वहां कैनाल से आता है, कैनाल का पानी प्रदूषित हो रहा है। हम ये मानते हैं कि राजस्थान में जिस प्रकार से राम सेतु के माध्यम से आप नेशनल प्रोजेक्ट ला रहे हैं या आप यमुना वाला ला रहे हैं, ये अगर सारे आएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था को इसमें लाभ मिलेगा। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं आदरणीय, आपने पेट्रोलियम के लिए यहां पैसे मांगे, मैं अगर स्टैटिस्टिक्स में जाऊं तो बात दोहराऊंगा, लेकिन मैं एक निवेदन वित्त मंत्री जी आपसे करना चाहता हूं। राजस्थान, गिव मी 2 मिनट्स सर, आई एम जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई नो आई हैवंट बीन एबल टू कवर एवरीथिंग। मैं सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान जैसे और भी कई प्रदेश हैं, आसाम है, आपके बॉम्बे हाई पर है, जहां तेल निकलता है, ऑयल निकलता है। 2010 में पहली बार, आखिरी बार 2004 में आखिरी बार रॉयल्टी पर बात हुई थी। सर अगर आज डॉलर की कीमत बढ़ गई है तो डॉलर की कीमत बढ़ गई है, इन राज्यों को अपना जो रॉयल्टी मिलता है डॉलर की तुलना में मिलता है, लेकिन रॉयल्टी पिछले 15 बरस में दोबारा रिविजिट नहीं की गई है। अगर हम प्रोडक्शन से इतना पैसा आपको दे रहे हैं तो आपके फॉरेन एक्सचेंज में उतनी ही कमी आती है। अगर हम इंडिजीनियस इस चीज को दे रहे हैं तो एक राज्य के नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य की रॉयल्टी को आप कम से कम दोबारा इस पे करिए, और क्यों ना हम इसको दोबारा इसका अवलोकन करें। मैं इतना सा निवेदन और करना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे बार बार ये निवेदन, आपने ये बार बार घंटी बजा दी। मैं इतना सा ही निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय अनुपूरक मांगों से भारत की अर्थव्यवस्था की व्यवस्थित स्थिति में कहीं कोई दुष्परिणाम नहीं आएगा, दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, और भारत अपने आप खड़ा होकर इस विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में भी अपना नाम करेगा। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्य श्रीमती संभावी जी। इतने महत्वपूर्ण चर्चे आपने मुझे मेरी पार्टी का पक्ष रखने की अनुमति दी। सबसे पहले हम अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की तरफ से सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट 2025-26 का समर्थन करते हैं, और चर्चा शुरू करने के पहले अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी नीतियों और वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है कि आज विश्व स्तर पर लोग उम्मीद से भारत की तरफ देख रहे हैं। ये उनकी नीतियों का परिणाम है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी है। आज सर पिछले क्वार्टर में हमारा जीडीपी 8.2% का ग्रोथ रेट जो है वो रिकॉर्ड किया था, जो अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर इसकी चर्चा विपक्ष वाले कभी नहीं करेंगे, ना ही इसकी सराहना करेंगे। अगर हम जीडीपी की बात करते हैं, वही अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार या जीएसटी कलेक्शन जो प्रति महीने है, वो भी अभी अर्थव्यवस्था में नए कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है। पर जितने भी हमारे विपक्ष के युवा नेता हैं जो खटाखट और फटाफट पैसा देने की बात कर रहे थे, वो अब देश से ज्यादा विदेश में देखे जाते हैं। अगर हम सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट 2025-26 की बात करें तो इसमें लगभग जो पहला बैच रखा गया उसमें 1,32,268 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की अनुमति मांगी गई है। विपक्ष के नेता जो हैं वो बार बार पूछ रहे थे कि सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट की क्या आवश्यकता है, बजट तो पेश हुआ था। पर मुझे गर्व होता है ये बोलते हुए कि हमारा लोकतंत्र एक जीवंत लोकतंत्र है और हमारी सरकार एक गतिशील सरकार है जो ना कभी रुकती है और ना ही विकास कार्यों से कभी पीछे हटती है। मुझे गर्व होता है ये बताते हुए कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। ये पैसा सारा, ये जितना भी सारा पैसा है वो गरीब, किसान, महिला, युवा, दलित, वंचित, शोषित वर्ग के लिए जा रहा है और उस विकास कार्य के लिए निकाला जा रहा है।
ये जो आवंटित राशि है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एलपीजी सब्सिडी की भरपाई के लिए जा रहा है, जिसके लिए लगभग 12,500 करोड़ की भारी राशि दी गई है। गरीबों के गैस कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन के लिए प्रोग्राम कंपोनेंट के तहत 3,178 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। अनुसूचित जाति के लिए 302 करोड़ और जनजाति के लिए लगभग 156 करोड़ अलग से रखे गए हैं। अगर हम बात करें एलपीजी सब्सिडी के लिए तो एससी और एसटी वर्ग हेतु क्रमशः 83 करोड़ और 43 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा मंत्रालय में प्रधानमंत्री वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत लगभग 2023 करोड़ का बड़ा राशि आवंटित किया गया है। इससे छात्र, जितने भी हमारे देश के छात्र हैं जो वंचित वर्ग से आते हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं, उनको विश्व स्तर पर जो आप कह सकते हैं कि जनरल रिसर्च का जो मटेरियल्स है वो उपलब्ध कराया जाएगा। ये उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत काम आएगा। अगर हम वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसके लिए कुल मिलाकर लगभग 235 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। केंद्र सरकार द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए लगभग 45 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ये राशि आवंटित जितने भी पॉलिसी और स्कीम के लिए आवंटित की गई है, ये हमारी जो बेस आधारशिला है, जो विचारधारा है, उसको और मजबूत करता है, जो है अंत्योदय, कि जो विकास का कार्य है वो पंक्ति पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी सदन में एक सांसद महोदया ने पिछले चर्चे में एक बात उठाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस के राज में सेल नहीं होता, इसरो नहीं होता, एम्स नहीं होता, डीआरडीओ नहीं होता, तो विकसित भारत का निर्माण कैसे होता। उनको हम ये कहना चाहते हैं कि विकसित भारत के निर्माण के लिए एनडीए की सरकार प्रतिबद्ध है। किसी भी तरीके से शिलान्यास करने को और काम पूरा करने को, वो दोनों में बहुत ही अंतर होता है। इमारत की नींव को रख देने से मकान नहीं बन जाता है। आप सब ने 51 साल में आपने मात्र एक एम का निर्माण किया है। ये जब 2003 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब जाकर 5 नए एम्स की स्थापना हुई। हमने 23 एम्स बनाए हैं। आपने 60 साल में, आपने आईआईएम की बात की, आपने 60 साल में सिर्फ 13 आईआईएम बनाए हैं। हमने 10 साल में 9 नए आईआईएम्स बनाए हैं और इसीलिए बिहार में भी एक नया आईआईएम मिला है। सर, डीआरडीओ की बात हो रही थी, डिफेंस की बात हो रही थी, तो उसके भी कुछ आंकड़े मेरे पास है। India recorded its highest ever defense production of 1.54 lakh crore in financial year 24-25. Defense exports reached a record of 23,622 crores and 16,000 MSMEs आज रक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जब आपके डिफेंस डील्स की बात होती है, जब आपने डिफेंस में क्या कहा, तो हमको जरूरत नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है कि डिफेंस डील में आप लोगों ने क्या करके यहाँ पे रखा था। इस मौके पर जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की बात करते हैं, तो ये हम लोग सिर्फ अर्थव्यवस्था में अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहे, हम लोग चुनाव परिणाम में भी अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे। हम बिहार से आते हैं और बिहार की तमाम जनता को हम प्रणाम करते हैं कि उन्होंने एक ऐसे सरकार को चुना, एक ऐसी गठबंधन को चुना जो नफरत और झूठी राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति करती है। बिहार में सर सबसे ज्यादा लंबे समय कि डबल इंजन की सरकार को आप कह सकते हैं कि अगर आप साल दर साल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर डबल इंजन की सरकार कहीं रही है तो वो बिहार में रही है। और 20 साल बाद भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिला। ये एनडीए की ताकत है, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। चुनाव के दौरान बहुत ड्रामा देखने को मिला, मछली पकड़े जा रहे थे तालाब में कूद कूद के, पर बिहार ने पूरे देश को बताया है कि राजनीति ड्रामा से नहीं, राजनीति नीतियों से चलती है, विकास से चलती है, नेता से चलती है और नेतृत्व से चलती है। इसी नेता और नेतृत्व ने आज भारत की अर्थव्यवस्था को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। कांग्रेस पार्टी का तो बिहार में इतना बुरा हाल था कि इनका जो चुनाव चिन्ह हाथ छाप, उसमें जितनी उंगलियां हैं उतने इनके विधायक ही बचे हैं अब बिहार में। बहुत ही जल्दी, 2 मिनट में बस समाप्त करें, बहुत ही जल्दी बिहार में भी कांग्रेस का वही पॉलिटिकल एक्सटिंक्शन होने वाला है जैसे दिल्ली में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ। हम बिहार की बात कर रहे हैं,
बिहार में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो ये बात भी हाईलाइट करना ज़रूरी है कि इंडिया अलायंस, मैंने पिछले सत्र में कहा था कि बिहार इलेक्शंस विल बी द लास्ट नेल इन इंडिया अलायंस कॉफिन, और आज ये देखने को मिलता है कि मकर द्वार में साथ में प्रोटेस्ट तो करते हैं पर इतनी शर्मनाक हार के बाद ये दोनों एक दूसरे से आंख तक नहीं मिला पाते ये अलायंस वाले। आज अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से इंडिया अलायंस वालों ने हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया, लोक जनशक्ति पार्टी और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पहले विपक्ष वाले पहले दिशाहीन थे, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि ये संस्कारहीन भी हो चुके हैं। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार ने एनडीए को बहुत बड़ी जीत दी है, बहुत मजबूती से सरकार को एक सशक्त सरकार चुना है। इसीलिए मेरी कुछ बिहार के लिए मांगे हैं जिसको हम सभा के पटल पर रखना चाहेंगे। हम समस्तीपुर लोकसभा से आते हैं और मेरी ये मांग है, एक विनम्र अनुरोध है कि समस्तीपुर लोकसभा में भी बड़े बड़े शिक्षा के संस्थान खोले, लॉ यूनिवर्सिटीज का निर्माण हो, कृषि संस्थान का निर्माण हो। एक सेकंड मैम, बस हम खत्म करें, 2 मिनट। पटना बिहार में बहुत युवाओं में पोटेंशियल है, एक आप कह सकते हैं टेक्निकल इंडस्ट्री को स्थापित करने का। पटना, समस्तीपुर, भागलपुर जैसे एरियाज़ को नोडल एरियाज़ बना करके यहाँ पे आईटी हब्स का निर्माण हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यहाँ पे संस्थान बने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पे एक आप कह सकते हैं संस्थान जैसे ट्रेनिंग हो, ये सारे संस्थान का यहाँ पे निर्माण हो ताकि हमारा स्टॉप माइग्रेशन विद थ्रू इनोवेशन का जो एक मुद्दा है उसको पूरा कर सके। बस 2 पंक्ति में हम श्री सुधाकर सिंह जी, ऑनरेबल मेंबर श्री सुधाकर सिंह, बात को खत्म करना चाहेंगे। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, ये जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनके। माननीय सभापति महोदया, मैं विनियोग विधेयक सप्लीमेंट्री बजट 2025-26 के विरोध में खड़ा हुआ हूं। विनियोग विधेयक पूर्णतः दिशाहीन और लक्ष्यहीन है। यह आंकड़ों और अंकों के भ्रमजाल के सिवा कुछ नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं बिहार के संदर्भ में कि फर्टिलाइजर पे सब्सिडी की बात भारत सरकार के द्वारा मांग की जा रही है। बस कंक्लूड कर रहे हैं कि विपक्ष को आरोप और प्रति आरोप से बच करके अपने अंदर भी झांकना चाहिए। 4 लाइन आप लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए की तरफ से भी सुन लीजिए। नजर नहीं नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं, हाथ जोड़कर बस्ती लूटने वाले बड़ी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनके जबान का जादू, लगा कर आग बहारों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पे, नदी सुखाकर किनारों की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। माननीय सभापति महोदया, विनियोग विधेयक 2025-26 के विरोध में खड़ा हुआ हूं। विनियोग विधेयक पूर्णतः दिशाहीन और लक्ष्यविहीन है। यह आंकड़ों अंकों के भ्रमजाल के सिवा कुछ भी नहीं है। फर्टिलाइजर पे सब्सिडी की भरपाई के लिए सरकार मांग कर रही है। बिहार जैसे राज्य में जहां गेहूं की बुआई अपने चरम पर है, पूरे बाजार से यूरिया, डीएपी, फास्फेट, पोटास जैसे प्रोडक्ट बाजार से गायब हैं। महंगे और काला बाजारी के जरिए वहां पे बिहार में फर्टिलाइजर बेचा जा रहा है। सभापति महोदया, फर्टिलाइजर एक्ट 1985 में साफ शब्दों में लिखा है कि अगर कालाबाजारी होगा, महंगे दर पे होगा, तो कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ कोई भी कानून का राज नहीं है, ना बिहार के भीतर न देश के भीतर। मनमाने तरीके से कंपनियों को फर्टिलाइजर का सब्सिडी दिया जा रहा है। लंबे समय से देश में किसानों की मांग रही है कि जो सब्सिडी है वह डायरेक्ट किसानों के खाते में आना चाहिए, सब्सिडी कंपनियों के खाते में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहीं पर भी नहीं। पूरा बिहार धान की खरीफ फसल पूरे खलिहान में पटा हुआ है। 15 से 20 दिन हो गए खेतों से निकल करके खलिहान में आया, लेकिन पूर्णतः खरीद वहां पे बिहार में बंद पड़ा हुआ है। और जो थोड़ी बहुत खरीद भी हो रहा है
300 से 400 रुपया प्रति क्विंटल के दर से अवैध उगाही पूरे बिहार में चल रहा है। इसकी कोई चिंता नहीं है। चुनाव बीता बिहार में, एनडीए ने नारे के साथ आए थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी लाएंगे। केवल धान नहीं, मक्का, गन्ना और गेहूं पर भी हम एमएसपी का गारंटी देंगे। लेकिन चुनाव बीतते ही 1 महीना देख लिया जाए बिहार में बाकी फसलों का क्या मूल्य मिलेगा। जो सामने है उसका भी पैसा वहां पर नहीं दिया जा रहा है। 23 एम्स की चर्चा हो रही थी। माननीय सांसद बिहार से ही हैं, उनके क्षेत्र के बगल में दरभंगा में 2016 में शिलान्यास हुआ था। उस 23 एम्स के ऑपरेशनल में से दरभंगा का भी नाम है, जिसमें 5 ईंट आज तक नहीं रखा गया। कम से कम माफी तो मांग लेते लोग, सरकार के लोग। कम से कम कोई बात रखने से पहले अपने ही जो जमीन पर देख लेते कि दरभंगा एम्स कहाँ है। 2017 में एक विश्वविद्यालय महात्मा गांधी जी के नाम पे मोतिहारी में सरकार ने दिया। आज तक उसके 5 ईंट नहीं रखे गए, बिल्डिंगें नहीं बनी। लेकिन बात तो बहुत ऊंची ऊंची बिहार के बारे में होती है। पिछले बजट सत्र में बक्सर से भागलपुर नया एक्सप्रेसवे बनाने की बात हुई थी। बकायदा 18,000 करोड़ इसी सदन के भीतर वित्त मंत्री ने कहा था, वो परियोजना बंद कर दी गई। मैं सरकार और पूरा बिहार पे बजट पे चर्चा हुआ था कि बिहार को स्पेशल पैकेज हम लोग 58,800 करोड़ देने का काम किए। उस 58,800 करोड़ से 18,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे हटा लिया गया और फिर पैती में एक बिजली घर भी लगाने की बात किया था इन लोगों ने। 21,600 करोड़ में वह फिर पैती घर, बिजली घर भारत सरकार नहीं लगाएगी, अब वो अडानी जी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर बजट का दिया गया पैसा कहाँ गायब हो गया। ये सरकार के बैठे हुए लोगों से मैं कहता हूँ, सदन से माफी मांगना चाहिए। एक बार सदन का ठप्पा लग जाता है बजट पर तो वह कम से कम बाइबिल, गीता और महाभारत से कम नहीं होता। अगर आपको ड्रॉप करना है कोई तो सदन के भीतर ड्रॉप करिए। नारे तो बहुत गढ़े गए सरकारों के द्वारा। एक बिहार में भारतमाला परियोजना की सड़क बन रही है, कैमूर से लेकर बनारस से लेकर के कलकत्ता जाएगा। उसमें सर्विस रोड नहीं है, किसानों के जमीन से हाईवे जाएंगे, लेकिन किसानों को चलने के लिए कोई सर्विस लेन नहीं। कल मैं आ रहा था उत्तर प्रदेश होके दिल्ली, आगरा एक्सप्रेसवे पर अखिलेश जी ने बनाया है। उस एक्सप्रेसवे के बगल में सर्विस लेन भी किसानों के लिए बनाया गया। ये विकास होता है। विकास का दोहरा मापदंड इस देश में सीखना हो तो गुजरात के लिए नए मॉडल हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश, बंगाल के लिए दूसरे तरह के मॉडल हैं। बिजली में बिहार को बिजली घर चाहिए, लेकिन बिजली घर क्या मिला? कोयला से बिजली पैदा करने वाले देश में हाइड्रोजन से बिजली पैदा होगा, परमाणु से बिजली पैदा होगा, ग्रीन एनर्जी दिए जाएंगे। बिहार को प्रदूषण फैलाने वाला बिजली घर, कोयला वाला बिजली घर दिया जाएगा। कैमूर की पहाड़ियों में अपार संभावनाएं हैं। पंप स्टोरेज के जरिए आप एक हरित बिजली पैदा कर सकते हैं, नई तकनीकी के जरिए, रन ओवर द रिवर्स के जरिए, जिससे आप पूरे बिहार नहीं देश के कई हिस्सों में आप बिजली सप्लाई कर सकते हैं। रेलवे, इस रेलवे क्यों हमारे लोग आते हैं, बिहार के लोग दिल्ली बॉम्बे क्यों जाते हैं बिहार के लोग? रोजगार के तलाश में, स्वास्थ्य सुविधाओं के उपलब्धता के लिए दिल्ली एम्स आते हैं या पढ़ने के लिए उच्च संस्थानों में आते हैं। लेकिन बिहार जाने वाली रेलवे लाइन अब भी 2 लेन की लाइन है। जो दिल्ली से कलकत्ता जोड़ने वाली जो दोनों लाइनें हैं वह 2-2 लाइन की है। लेकिन रेलवे को पैसा चाहिए, लेकिन रेलवे का निवेश बिहार में 2 लेन से 4 लेन रेलवे का नहीं। आज तक मुगलसराय से पटना भाया 2 लेन का रेलवे ट्रैक इतना कंजेशन में रहता है जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बिहार की ट्रेनें लगातार लेट से चलती हैं और नई ट्रेन नहीं चलाई जाती क्योंकि इस ट्रैक पर चलने के लिए जगह नहीं है। ये साधारण लड़ाई नहीं है। बिहार के लोग बिहार को लेकर के लगातार पलायन को लेकर के बहस चलाते हैं लोग। पलायन बिहार में क्यों है? कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं के बराबर, हाईवे के क्षेत्र में निवेश नहीं के बराबर, बिजली के क्षेत्र में निवेश नहीं के बराबर। बिहार की आबादी देश की आबादी का 10% है। 11.5 साढ़े 11 लाख
हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के लिए बजट में प्रोविजन है? क्या बिहार की हिस्सेदारी अगर 10% भी अगर है तो बिहार की हिस्सेदारी 1.25 लाख करोड़ की बनती है, लेकिन बिहार को मिलता कितना है? पिछली बार 58,800 मिला था, जिसमें 2 परियोजना निकाल दीजिए 40,000 करोड़, तो बिहार को 18,000 करोड़ मात्र मिला। इस बार का तो वह भी नहीं मिला। मुश्किल से 19-20 हजार करोड़ की परियोजनाएं बिहार को इन्होंने देने का काम किया है। बिहार के जो ये नाइंसाफी है, केवल बिहार के साथ नहीं, या उत्तर भारत और पूर्वी भारत के साथ नाइंसाफी है। इस देश में जो 11.25 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे जाते, वो ज्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र के इलाके में चले जाते। इसलिए बिहार लगातार विकास के पैमाने में पिछड़ता जाता और पलायन बढ़ता जा रहा है। माननीय सभापति महोदया को मैं बहुत विशेष धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता। धन्यवाद। माननीय सांसद श्री आर सत्यनाथम जी। Madam, thank you very much for giving me the opportunity. The first batch of supplementary demands for the financial year 25-26 was presented by our Honorable Finance Minister on December 1st, 2025. She demands rupees 18,525 for the fertilizer subsidy, rupees 9,500 for LPG subsidies, rupees 2,500 crore for Ministry of Home Affairs, rupees 1,200 crore for External Affairs, rupees 1,304 crores for higher education. On behalf of CPIM, we have some differences in these demands. I saw from the newspaper published on December 9th, which noticed 52-year-old Jamuna Kushwaha collapsed and died while waiting in the line for 3 consecutive days to secure 2 bags of urea at the distribution center in Tilgamgarh district of Madhya Pradesh. Protest against looting and farmers' death going on as the fertilizer crisis continues. Another news I read through newspaper earlier in August, the FACT, a central public sector undertaking, is selling private company fertilizer in its own bags. The 2 companies which manufacture single superphosphate SSP fertilizer manufactured by Coimbatore Pioneer Fertilizer have signed an agreement for this. FACT is facing a major production crisis as a result of union government policy. It is purchasing fertilizer from private sector as a part of an effort to avoid a major decline. Fertilizer shortage crisis and block marketing of fertilizer is occurring all over India, but our finance minister seek approval to release fertilizer subsidy. If the subsidy benefits goes directly to the farmers, they can buy fertilizer anywhere. But we give subsidies to the companies, it will be useful for black marketers, not for the farmers. So you make suitable change in the policy. Regarding LPG subsidies, the subsidy amount rupees 300 per 14.2 kg LPG cylinder. The beneficiary is about 10.33 crore with PMUI connection across India as of July 2025. No others getting subsidies. While acknowledging the schemes like PMUI, the adequacy of number of subsidized cylinders provided annually, initially 9, later increased to 12, then back to 9 in some proposals for financial year 25-26. They have noted that high recurring cost of refills, even with the subsidy, can force poor households to revert to using traditional, less clean cooking fuels like firewood. After April 22nd, Pahalgam attack in India administered Kashmir, which killed 26 civilians. The terrorist organization Lashkar-e-Toiba was involved in this attack. After Sindoor operation, from May 7th to 10th, all terrorist camps are demolished by our drone attack by our defense team. We all supported. Even after this attack was brought to an end by the American president. Why is a car bomb explosion still occurring in the capital Delhi near the Red Fort? What action have been taken regarding this? Is this failure of the intelligence agencies operating under the Union Home Ministry? Or should we ask the American president to investigate this as well? Ensure
internal security, focus on the citizens instead of just the temples. From April 2nd to November 23rd, our Prime Minister visited 18 countries. Today he added his visit to 3 more countries. What work did he do domestically? The only things that happened were the hoisting the flag at Ram Temple and waving the flags to the trains. What happened to the promises made during the farmers' protest? Enact a law, provide fair prices for agriculture produce, implement the health care plan for all, immediately release PM JVK scheme funds for minorities, start postgraduate Ayurveda course in Tamil Nadu colleges, start a rope car scheme from Pilgrimage Center Palani to Tourist Center Kodaikanal under Prasad scheme. We demand immediate fund release for Manrega in Tamil Nadu. Don't change the name of Mahatma Gandhi to Bujye Babu. We condemn the government for name change. We demand to procure paddy with 22% moisture in Tamil Nadu. We demand reconsider the approval of Coimbatore and Madurai Metro Rail project. We demand rupees 3,000 pension per month for the disabled persons instead of rupees 300 per month. Thank you very much, madam. Thank you. Thank you. Honourable Member, Sri P.V. Midun Reddy ji. Thank you, ma'am, for letting me participate in this discussion on demand for grants. Madam, in our state of Andhra Pradesh, the state debt is rising at an alarming level. The difference in the growth of revenue and the increase in debt there's a huge mismatch. And if you see, madam, after the new government has formed in the past 18 months, the debt of the state is 2,66,000 crores. It is the highest in the country that any state has borrowed. And if you see the previous government's debt for the 5 years, that is the YSRCP government's debt for the 5 years, that is from 2019 to 24, is 3,32,000 crores according to the Parliament Minister's answer. The debt is really alarming, and if you see the growth of debt, it is growing at a CAGR of 22% in Andhra Pradesh right now, ma'am. It's the highest in the country, and the previous government was just 13.5%. Madam, the government is borrowing desperately through any possible means. If you see recently, Andhra Pradesh Mineral Development Corporation raised debt through NCDs, through private people. They borrowed at 9.3%, which is very, very high for a government to borrow. And they gave a commission of 1.5%, which is coming to almost 150 crores to private people. Madam, the worst part is the part of the conditions in this NCDs is that private people get access to the consolidated fund of the state. Imagine, madam, how can private people draw money without the government permission or without any official people? And most recently, right now, the Andhra Pradesh Beverage Corporation Limited has again called for NCDs for 5,950 crores, or roughly below 6,000 crores. And again with the interest rate of 9.9+% and a commission of 1.5%. Madam, I would like to recall that in the previous 2019 and 24, the Finance Secretary wrote to all the states saying that any borrowing you do through government subsidiaries to the corporations, it will be a part of the Article 293 of 3 of the Constitution, which says that all the borrowings, indirectly if you do also, it will be in the part of net borrowing ceiling, part of the NBC. And even in August 22, 2022, the Finance Secretary wrote to the Chief Secretary of Andhra Pradesh saying that the then government wanted to borrow same through NCDs through the Beverage Corporation Limited. They said this is going to be part of the borrowing limit of the state. So even you borrow through your corporations, it is going to be part of the borrowing limit of the state. Madam, right now, I would like to ask the government, right now the current TDP government has borrowed through APMDC and now they are borrowing through Beverage Corporation Limited. My question to the Honorable Finance Minister through you is,
Has the rules changed then and now? When the previous government wanted to borrow, they said it is part of the borrowing limits. Is it part of the borrowing limits now or not is what we want a clarification from the government. Point 2 is that when the government banks are prepared to give at 6% interest rate, why do you want to borrow from private parties at 9.3%? Why do you want to waste public money, and why do you want to give commissions, 1.5% commission running into hundreds of crores? Is this not a scam, ma'am? This has to be taken up seriously. And the third part is that similarly between 2014 and 19, when TDP was in power, it was part of the NDA, they overborrowed, and then the next government, it was again deducted in the next YSRCP government between 19 and 24. Madam, and I want to ask the government, is it not a very bad precedent letting private people have access to the consolidated fund of the state? Imagine all the borrowers have access to the consolidated fund of the state. Everybody is going to put condition that we want this condition to borrow to the state, to lend to the state. What is the situation in the future? State will not have any access. There won't be any access for the government to control it. So this is a very bad precedent. The center has to step in and make sure that such conditions are not put up by the states. And we want the Honorable Finance Minister in her reply to talk about this bonds which the AP government is raising and which is against whatever rules set by the central government themselves, whatever letter the central government has written to our state. And coming to Manrega, ma'am, for the past 7 months, the labor component is pending in our state. The center, when we met the Honorable Minister, they said that the fund is ready, you have to talk to your state. Madam, the labor component has to be paid in 3 days. The Act says the labor component has to be paid in 3 days. How can the labor sustain for 7 months? And there are almost 90 lakh active laborers registered in the state and who are dependent on this. What is the future of, how do they sustain and how do they survive, ma'am? And the worst part is, from the Telugu Desam party, we have a minister who handles rural development from the center, ma'am. Mr. Chandrasekhar, I don't know if he's here or not. What is he doing? I don't know, ma'am. Even in his own constituency, the Manrega payments are pending for the past 7 months. This is a shame to our state, and it's really pathetic. Madam, we demand that Manrega payments be released soon, and the minister, at least somebody put some sense into the minister's head and make at least in his own state, the neighboring states of Telangana and Karnataka are much better off in Manrega compared to our state. And Madam, we oppose the privatization of Visakhapatnam steel plant. Systematically, step by step, it is being privatized. Our party demands that Visakhapatnam steel plant should not be privatized, and it should be, the government should support it with mines, madam. Without mines being allotted to Visakhapatnam steel plant, it will not be viable, and selling it at dead cheap rate is not an option. We oppose the privatization of Visakhapatnam steel plant, and this current government, it has borrowed 2,66,000 crores in Andhra Pradesh. They need just 4,000 crores to complete all the 17 medical colleges, which the previous government has taken up. Now, this government is planning to sell all these medical colleges to private people in the name of PPP, which we are opposing, ma'am. We ask the central government to step in. Already the central government earlier had given funds for 3 colleges, and now the rest of the other colleges also. We demand that central government step in and stop this process. Anywhere we go in Andhra Pradesh, ma'am, anywhere, any private hospital and any private, government hospital, you see thousands of people around a government hospital, and we don't find people outside because they are all profit motivated. So healthcare should be in the hands of the government, and we demand that the privatization of medical colleges not be there. And one more, the last issue, ma'am, Kadapa-Bangalore railway line. Madam, the recently Honorable Railway Minister said, I am ready to do this project if your state provides the matching grant. Madam, TDP government is part of the NDA government. Through you, I demand the government, they provide the matching grant, and the funds for complete project has to be given by the center, because TDP and BJP is one and part in the state. So we demand that Kadapa-Bangalore line, which is important, be taken up. Thank you very much, ma'am.
माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी। धन्यवाद सभापति जी कि आपने पूरक अनुदान की मांगों पर पार्टी की तरफ से मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आज के इस मौके पर सभापति जी मैं सुन रहा था जब बजट के बारे में सत्ता पक्ष से जगदम्बिका पाल जी ने बात शुरू की थी और बात कुछ इस कदर शुरू कर दी थी कि लग रहा था कि मोदी जी के राज में 11 साल के कार्यकाल में पता नहीं देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है। समाजवादी, अरे सुनते चलिए, भी सुनाएंगे। सभापति जी, समाजवादी पार्टी की ओर से माननीय अखिलेश यादव जी की ओर से इतना बड़ा स्वामी राम जी को वहां बैठाए पीछे, भगवान राम जी का जो पात्र लेके जिनके नाम पे चुनाव जीते हो, कम से कम सीट तो उनको आगे दे दो। मैं अनुरोध करूंगा, सीट तो आगे दे दो, भगवान राम के सम्मान तो कर दीजिए। उन्हें आगे बैठाना चाहिए। सभापति जी, नहीं, आप आगे आइए। सभापति जी, ये अनुपूरक बजट की जब चर्चा शुरू हुई तो सबसे ज्यादा सब्सिडी, यूरिया सब्सिडी के नाम पर बिल बजट मांगा गया और लगातार किसानों के लिए जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई। कुछ सच्चाइयों को मैं आपके माध्यम से सदन और सदन के साथ साथ देश के सामने रखना चाहता हूं। जब 2014 में यूपीए की सरकार थी, उस समय देश के किसानों के ऊपर केवल 7.5 लाख करोड़ कर्ज था और 11 साल में वो 7.5 लाख करोड़ कर्ज बढ़ के 28.5 लाख करोड़ हो चुका है। सभापति जी, उस समय प्रति किसान केवल 37,000 रुपए कर्ज था। आज की तारीख में वो 37,000 बढ़ के पर किसान 78,000 रुपए हो चुका है प्रति किसान। सभापति जी, ये जो सरकार है ये चुनिंदा कॉर्पोरेट लोगों के लिए काम कर रही है। 16.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज कॉर्पोरेट का माफ किया गया, लेकिन पूरे कार्यकाल में किसानों के लिए एक भी कर्ज माफ नहीं हुआ। सभापति जी, लगातार प्रधानमंत्री जी से लेके पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग, सत्ता पक्ष के लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं 2015 से लेके लगातार कि हम किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे। हमारे पास डेटा है, पूरे के पूरे 11 साल में किसानों की आमदनी केवल प्रति किसान 1,000 रुपए बढ़ी है। स्वामीनाथन जी के बारे में 2014 में कहा, 17 में कहा, 19 में कहा, 22 में कहा, आज तक स्वामीनाथन जी की सिफारिश रिपोर्ट को लागू नहीं किया है। किसान नहीं है, इसलिए नहीं कर। ये सच्चाई है इनकी। सभापति जी, दूसरी बात इन्होंने की रोजगार की। रोजगार के मामले में जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, कहीं पेट्रोल पंप पे कोई अगर वो सेल्समैन बना हुआ है, पेट्रोल भर रहा है, कोई घुमचे वाला, तमाम तरीके के सर्वे करा के, फर्जी आंकड़े पेश करके, और अब तो विदेशी संस्थाएं भी यहां तक कहने लगी कि हिंदुस्तान की तरफ से फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। तो इसलिए सभापति जी, मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं। सभापति जी, अगर देश की हालत जो बात करते हैं, तमाम सत्ता पक्ष वाले, जीडीपी मैंने इतनी बढ़ा दी, जीडीपी उतनी बढ़ा दी। आप सोचिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा देश 2014 में 55वें नंबर पे था और आज हम 2025 में बात कर रहे हैं तो 102वें स्थान पे पहुंच गया है। केवल 123 देशों में से। प्रति व्यक्ति आय घटी है, किसानों का रेट बढ़ा है। लगातार प्रधानमंत्री जी उस समय 2014 से पहले जब बातें करते थे, उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को अपमानित करते थे और उम्र की बातें करते थे, लेकिन जब तक उनका कार्यकाल चला तब तक डॉलर के मुकाबले रुपया केवल 60 था और आज आपके समय में 90 पार कर चुका है। आप सोचो, इस बात को हम किस तौर पे परिभाषित करें। आपने रोजगार की बहुत बातें की, नौजवानों की। सभापति जी, आज हम आपसे जब बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, आज ही उत्तर प्रदेश के अंदर जिस आयोग को आपने माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में बदनाम किया, आज उस कार्यकाल, उस आयोग का यह हाल हो गया है। माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश के अंदर 53 से ज्यादा पेपर लीक होके परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर, और 11 सालों में देश के अंदर कोई भी भर्ती पूर्ण नहीं हुई है। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं माननीय सभापति जी, इस समय इलाहाबाद के लोक सेवा आयोग में उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवान
अपनी बात को रखने के लिए, वहां के निमित्ताओं को दूर करने के लिए जब इलाहाबाद के आयोग के सामने खड़े थे तो आप विजुअल्स, आप महिला हैं, आप संवेदनशील हैं, आप देख के आश्चर्य करोगी कि किस तरह से वहां के नौजवानों को, युवकों को, युवतियों को लाठी चार्ज करके, बाल पकड़ के घसीटा जा रहा है। अमानवीय व्यवहार आज प्रयागराज और इलाहाबाद में हो रहा है। सभापति जी, बहुत बातें की बेरोजगारी को दूर करने की। अरे सुन लो, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात आपने की और 2 करोड़ रोजगार देने के बाद सभापति जी साल दर साल मेरे पास डेटा है और आज की तारीख में आजादी से लेके अब तक अगर बेरोजगारी की दर कभी सबसे ज्यादा बढ़ी है तो आज हमारे देश में 8% से ज्यादा बेरोजगारी की दर आज बढ़ी हुई है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। सभापति जी बात करते हैं ये लोग जनगणना के नाम पर पूरे देश में। मुझे याद है, मुझे भी सौभाग्य मिला था सदन में, श्रद्धेय नेताजी, श्रद्धेय शरद जी, आदरणीय लालू जी से लेके पासवान जी थे, सभी लोगों ने मांग रखी थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए 2010 में। ये गलती की कांग्रेस के साथियों ने उस समय नहीं की, लेकिन इस समय जब एनडीए की सरकार ने वादा किया है, मैं स्वीकार कर रहा हूं वादा किया है, लेकिन वादा तेरा वादा, कोई वादे पे भरोसा नहीं रहा। हालत ये हो गई है, एक भी वादा पूरा नहीं है, इसलिए जातीय जनगणना के भी वादे पर देश की जनता को अब आपके ऊपर भरोसा नहीं है। आपने बजट मांगा है, आप ले जाइए बजट, लेकिन ये इस बात का जवाब आना चाहिए कि आखिर जनगणना कब हो रही है और जो जनगणना हो रही है उस जनगणना में जाति जनगणना आप शामिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। सभापति जी, यूरिया की जहां तक सवाल है, सबसे ज्यादा ढिढोरा पीटा जा रहा है। यूरिया के लिए अनुपूरक मांगे की गई है, लेकिन यूरिया की हालत क्या है? बिहार के साथी चर्चा कर